there are three things that will happen during this course. एक होगा जो obviously हम speakers के साथ में introductions करेंगे. So our speakers today are distributors and producers. And we are going to talk about distribution के secrets क्या हैं, distribution के processes क्या हैं. Obviously with the current time हम किस तरह से अपनी फिल्म्स बनाते हैं और किस तरह से ऑडियंस तक लेके जाते हैं, बहुत कुछ बदल रहा है. सो इस टॉपिक को हम वहां से सुनेंगे कि जो अभी के करंट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ आर दे मेकिंग श्योर दैट both ends of the market meet up, which is the creators and the audience and the theaters and OTTs and all of that. So apne questions, please keep sending me your questions. You can DM it to me on Zoom here and I will show we discuss that. Second is that we are also going to have a live pitch during this session at some point of time. So wherever there is a feasibility, so जिसको distributors को अपना एक pitch live करना हो आज इस वक्त, please send us that information on DM. Send us your name and my team, मेरी टीम ने ऑलरेडी आपको कांटेक्ट किया होगा. अगर आपके पास ट्रेलर रेडी है which you want to showcase, please send it to my team or send it here, right? So there'll be live networking at the end of this discussion. At the end जब आप directly producers, directors के साथ में अपना introduction और अपने questions pose कर सकते हैं. They will be pitching during the sessions and there will be trailer showcase. So if you have your trailer ready, please send it to us. Our team will review it and couple of the shortlisted ones go dikhaya. All right. Any questions so far about the flow, about anything that you want to know? कुछ भी पूछना है तो please बताइए. Avinav, please अपने Zoom पे अपना नाम change कर दीजिए. But thank you अपना नाम बताने के लिए. I'll try and remember that. Hello. Hi. Hello. Yes, please. My name is Sumit. I'm a filmmaker. So I have a question. What are the important things that a filmmaker should be keeping in mind before making a film? So that when we take our film to the distributors, what are the main important things which they look into? Like, for example, do they see कि film में कोई known face है कि नहीं, या things like that. So what are the basic things the distributors see in the film? Perfect. I think आपका क्वेश्चन इतना वैलिड और इतना रेलेवेंट है सबके लिए कि ये तो डेफिनेटली कवर होगा ही होगा. तो आप पूरी कॉन्वर्सेशन को सुनिए एंड अगर उसके बाद भी नहीं एड्रेस होता है तो डेफिनेटली जो लास्ट में नेटवर्किंग सेशन होगा उसमें आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोड्यूसर्स से एड्रेस कर सकते हैं. बट थैंक यू फॉर द क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर बीइंग बोल्ड इनफ टू कम अप विद द फर्स्ट क्वेश्चन. जो लोग सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि बाकी सब लोग देखते रहते हैं कि कोई और पूछे तो मैं पूछूंगा. तो जिसने पहली बार हिम्मत करी, awesome. Okay, Avinav, no problem. I'll try and remember your name, Avinav. All right. Any other questions? Chat में भेज दीजिए. Don't need to unmute, but chat में भेज दीजिए. So जब तक आप लोग ये करोगे, let me bring to you a brief introduction कि आज हम क्या कर रहे हैं और कौन हैं. So my name is Sonia Choksi. मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ मैच माय टैलेंट की. मैच माय टैलेंट इज अ सर्च इंजन फॉर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट. सो हमारे साथ अप्रोक्सीमेटली 40-45,000 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो कि विच मीन्स एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस जुड़े हुए हैं. और हमने एक सर्च इंजन बनाया है बाय विच filmmakers like you all can just type in, just imagine what is the kind of a character that is going on in your mind. You type in that character sketch onto the search engine और वो it will lead you to the artist who is a part of our network और फिर आप उनसे directly contact कर सकते हैं. We don't work like an agency. We don't believe in the agency system. We believe in direct connectivity and that is what Match My Talent is all about. तो ये Foreground Forum क्या है? आज हम यहाँ क्या कर रहे हैं? So this is one of our very favorite initiatives जिसमें हम इंडस्ट्री के अलग अलग डायरेक्शंस को कनेक्ट करते हैं. This is our way of bringing our network together for everybody's benefit. We also have another initiative called the Malhar Film Festival, which just concluded in September.
So again, it's a global film festival जहाँ पे filmmakers अपनी film submit करते हैं. There is a jury team, there is a distribution team, and there is a huge amount of master classes and sessions that are a part of that. So just trying to bring in as much value as we can to all of you filmmakers. Why? Because I'm a filmmaker and I have been through all of that journey, and I completely realize कि कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं है इस इंडस्ट्री में. सब कुछ अपने वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करता है. आप किसको कब जानते हैं उससे आपके आगे की जर्नी बनती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, बट बहुत डिफिकल्ट है टू टेक इट इन द लॉन्ग रन. एंड हेंस ऑल ऑफ दिस वर्क. So please make best use of our network, of this opportunity altogether. That is about today's forum and our background. I would like to open up this session very briefly and very quickly aap logon ke liye, and any 5 people can raise your hand and come for a quick introduction right now. There are a couple of other distributors also who are listening to this conversation right now. So first 5 people, raise your hands and we will call you for a quick introduction. And then of course, baki sabka bhi, we will keep taking that up. Thank you, Dharam. Thank you. Got your question. Okay, Suhas, unmute yourself and please join in. Please come for an introduction. Hello, everyone. This is Suhas, and I'm a filmmaker from Hyderabad. Okay, not completely a filmmaker. I'm a student filmmaker who's studying in a film school and almost in my final year. So I'm searching कि किधर मिलेगा distribution, किधर मिलेगा पैसा film के लिए. तो yeah, hello distributors, कैसे हो? मिलते हैं. All right, great, Suhas. Suhas, have you already made any film or you on your first one? I have made short films. I have not made my feature yet, but I'm okay. I'm going. You're looking for distribution for a short film or for the feature? I actually am searching for distribution for my short film plus the feature film that I'm going to make in the future. Okay. So जो short film का आप distribution अभी ढूंढ रहे हो, क्या उसका कोई trailer है जो आप share करना चाहोगे? Do you want to participate in the live pitch today? Yeah, उसका तो film ही है. Actually, it's a very short film. It's a 4-minute film. So I have not made the trailer cut yet. Okay. But there's a film that I can show you. Okay. So please send it to my team on the WhatsApp that they have been talking to you. We'll review it quickly. If it qualifies, we'll call you for a live pitch during the session today. You know, otherwise, of course, the whole network is open for you guys, but just send the link quickly. All right. Okay, great. Devan, is that the correct pronunciation? Devan, do you want to go next? Okay, while we wait for him to respond, Sumit, I think you raised your hand. Okay, Devan, go ahead. What's happening? Okay, Shantanu, why don't you go ahead till then? Hi, this is Shantanu. I'm a Bengali film director. My first film released in 2019 and it was Kolkata Kohinoor. And basically I'm working on the regional market and now I want to establish myself in the national market. तो इसीलिए मुझे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में कुछ पता होना जरूरी है. तो रीजनल मार्केट पे मुझे थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज है, लेकिन आई वांट टू नो द होल इंडियन मार्केट और द इंटरनेशनल मार्केट के जहां पे मैं अपना एज ए फिल्म मेकर मैं अपना फिल्म लेके जा सकता हूं और मैं काम कर सकता हूं. परफेक्ट, ये सेशन उसी बारे में है. सो आई एम होपफुल. मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वैल्यू होगी. दिस इज व्हाट आवर एक्सपर्ट्स आर गोइंग टू टॉक अबाउट. एंड अगर पूरे सेशन के बाद में भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो लास्ट के नेटवर्किंग में प्लीज ज्वाइन करिएगा एंड वील क्लैरिफाई ऑल ऑफ दैट. ऑसम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. शमस, व्हाट अबाउट यू? Hi, good evening, everyone. Thank you for getting such a session now. And I was a participant in the Malhar Film Festival last September. It was a nice session. Thank you very much. Yeah, today, and I just wanted to ask, like, I'm in the process of making a short movie in Kerala, which is based on the legendary writer
Mr. Vaikam Muhammad Bashir is no more now, and the story is like it's not the direct story of that writer, but it will be a kind of representation to or something like a way of telling in the other way. Like it's not a direct storytelling of that one, but it's a kind of different way of telling the story in a contemporary way. So the story belongs to a very, old, slightly old, but what we are telling the story at the contemporary step. So we are in the process of making. Probably the shoot will start in April, and I'm just looking for a distribution. And if there is any production support in this case, and we are going with the high-end, the cameras and the technical team, and it will be done in a cinematic format. Even though I call it as a short movie, it will be maybe in a length of 20-25 minutes. But all the technical things and the other supports will be done in a very cinematic way. And there is a song which has already been recorded and sung by a famous ghazal and a film singer whose name is Shahbaz Aman. So he is one of the leading singer in Malayalam and ghazals now. So he sang already for us. So we'll be in the process of shooting that. So this is I just wanted to present this to the team and find any support or advices from your side. Thank you. Absolutely. So all the distributors on the panel right now, please hear it out, apart from everybody else. And then if you have specific question from Shemij, we'll be happy to take it up in the session again. Okay, Vinayak, you want to go for a quick intro? Hi, everyone. This is Vinayak this side. I hope my voice is audible. I'm not well. So I am from Mumbai only. I have worked as an AD in the past, and currently I'm working as a creative consultant. I make ads. I'm mostly involved in ads from past 2 years. So I have made a short film in the past. It is already there in CineHub. It's a Korean platform. But after 2-3 years of working in ads, I felt it's time that I start writing again. So I just wanted to understand how distribution works. Though I have been part of 2 feature films as an AD, but I just lost track of it. So I'm just restarting everything again. So that's all about me. Beautiful. So I think aap bilkul right spot pe ho, right frame of mind mein ho is waqt. So I'm really hoping ki ye session aapke liye available hoga. And then of course, like I keep saying, Match My Talent ka pura network hamesha available hai. So make the best use of it today, and then we can reconnect for anything else that you want. All right. Last, I think, Uma, you have raised your hand. You want to go for a quick intro? Yeah, hi, everyone. My name is Uma, and I'm from Bangalore. So I'm in the process of making a film, and especially based on child psychology and parenting. So that is something that I am working on. The scripting is in the process. And I would love for any kind of support in the making of this film, because I think it is also very necessary to talk about it, to speak about, how children are brought up. And it's not very preachy or anything like that, but it's more to do with presenting a perspective on, different perspective from different sides, from a child's perspective, from a parent's perspective, and something to think about in the direction of, okay, is this where we want to go with our children, or is this how we want to go with our children? So that I'm trying to explore with my movies. That's the process I am in. What stage are you at, Uma? It's just at the screenplay stage. That is where it is. The script work is done, and so beyond this, I want to now look at the next process for production. All right. Thank you very much. So anybody who has a trailer ready and you want to pitch it to the distributors today, anytime in the session, please send it on our WhatsApp number, the number that our team has been interacting with you, and we'll look into that. Otherwise, of course, later it can happen. And if you're at a screenplay stage or a pre-production stage, and you want to look out for more producing help, production support, then we will take that up in the networking meetup at the end, where a producer would also be there. All right.
Yes, it can be short film, it can be any length, you know. See guys, use this to get to know each other. Okay, formats mein mat phaso. Short, long, genre, nothing is critical, because it's about you as a storyteller. So the idea is ki aap as a storyteller is able to get your time with the distributors and the producers who are joining us today. They get to know you, you get to know them. Use this session for that, and of course all the learning. Then today you will make a short, tomorrow you will make it long, but this network will always help each other, right? So don't get stuck into anything, just pitch yourself, your ideas, and you as a person. What I think is that every time your story will keep changing, but you as a person is who drives the story all the time. So I think that is what the distributors and producers are also always looking for. So just be that. All right. So without further delay, let me bring in our first and foremost guest to you, Mr. Chaitanya Swami. He is the founder, director of AS Pictures and Entertainment. Originally from Meerut, Uttar Pradesh, based in Bombay, have done years and years of work. बहुत सालों का इनका distribution, production, producing का experience है. और खास करके it's a huge opportunity for us कि Mr. Swami has agreed to come and share with us. The reason is that the people who work with regional, Hindi, the Bollywood, so to say, and also with Hollywood, the experience is very wholesome. After doing work at regional, national, international level, the trade secrets are out. The trade secrets, जो छोटी nuances होती हैं of the filmmaking and the distribution, taking it to the market, and especially the people who have existed and survived the pandemic. Because after the pandemic, the entire format, the viewing habits of the audience क्या OTT में पसंद करता है, किसके लिए वो सिनेमा जाता है, सिनेमा हॉल लोग अगर नहीं जा रहे हैं इस वक्त तो क्यों नहीं जा रहे हैं. That is also something that as a filmmaker we all have to understand, because of course एक filmmaker का dream होता है कि उसकी film theater में चले. Every filmmaker would want it, right? And as an audience, there is nothing comparatively similar to watching anything in a theater. But the dynamics have changed after the pandemic. So the reason that we are very, very honored to have Mr. Swami come and talk to us about it today is because उनके बहुत strong point of views हैं, बहुत clear point of views हैं of क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, filmmaker को क्या चीज देखनी चाहिए, distribution channel कैसे work करता है, और उनका पूरा जो experience है, that is extremely important for us to learn from. So that is the reason that he's here. But to give you a context, Mr. Swami बहुत committed हैं of creating platforms जिसमें cost effective productions हो सकें, cost effective distributions हो सकें. Please mark the word cost effective. उनका बहुत focus है cost effectiveness लाने में, क्योंकि big banners, big budgets, big everything, it's fine. But ultimately वो जब भी जितना भी big होता है, cost transfer हो जाती है audience के ऊपर. Finally, obviously the audience pays for it, right? And audience हमेशा may not be ready to pay that kind of a cost. And especially today when audience is spoiled for choices. So he is looking at every step of the filmmaking to make sure कि ये platforms create हो, जहाँ पे obviously the filmmaker gets what they want, actors and artists get what they want, but overall it's an affordable film in the making and it's sending over to the distribution. So I think that is the main reason I am very excited to hear from Mr. Swami, because finally somebody is talking about cost effectiveness and yet bringing in shows and formats which are very high quality on the outside. So Mr. Swami, welcome to the Foreground Forum and Match My Talent. Thank you जी, thank you. आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप देख रहे हैं ये सारे इंडिपेंडेंट फिल्ममेकर्स, यंग फिल्ममेकर्स के पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बट मैं 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ जो कि शायद सबके लिए रेलेवेंट होंगे और फिर हम ऑडियंस इंटरेक्शंस भी कर सकते हैं. ओके, सो मिस्टर स्वामी, आज के टाइम में कौन सी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं जो कि बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करते हैं,
strategies and channels? Distribution channel as a theatrical, तो आपका थिएटर है कि OTT प्लेटफॉर्म है, उस पे आपके कंटेंट, आपका मेकिंग किस टाइप का हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, आर्टिस्ट वैल्यू डिपेंड करेगी आपके उस पर मेकिंग पे, कंटेंट क्या है आपका। अगर कंटेंट बेटर है, अच्छी मेकिंग है, तो कोई भी OTT उसको लेने के लिए पीछे नहीं रहेगा। और बाकी अदर ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसपे डिजिटल कम से कम मेरे ख्याल से 72 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसपे आप आपकी पिक्चर आप दिखा सकते हैं। जैसे कि ये 72 में कौन है? देखिए अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म के नाम तो मैं नहीं गिना पाऊंगा, मगर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसपे आप अपनी पिक्चर को दिखा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अच्छा कंटेंट होगा तो कोई भी चीज आने से नहीं रोक सकता। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका रोल कि हर एक फिल्म मेकर डायरेक्टली तो चैनल्स तक नहीं पहुंच सकता, वो प्रोसेस, वो सिस्टम ही नहीं है। सो यहाँ पे आते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आप तक या खास कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचने का क्या सही समय है, किस स्टेज पे फिल्म मेकर को आप तक पहुंचना चाहिए और किस तरह के प्रिपरेशन के साथ पहुंचना चाहिए जिससे कि वो वैल्यू फॉर टाइम हो आपके लिए। देखिए, पिक्चर को या तो बनाने से पहले कंटेंट लेवल पे, जब आपका स्क्रिप्ट लेवल पे वर्क चल रहा हो तब पिच कर सकते हैं आप, तब बात कर सकते हैं, या बनाने के बाद टीचर के साथ आप अपना कंटेंट पिच कर सकते हैं, फिल्म पिच कर सकते हैं। वो एक प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपने अभी ये प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम किसी से भी पिच कर सकते हैं, बात हो सकती है, हम तक आ सकती है, अदर किसी डिस्ट्रीब्यूटर तक जा सकती है। देखने के बाद वो डिसाइड होगा कि हम किस प्लेटफॉर्म के लिए काम कर सकते हैं। थिएटर के लिए कर सकते हैं, किसी OTT के लिए कर सकते हैं, समझ गए? ओके, तो स्क्रिप्टिंग स्टेज पे हो सकती है या फिर जब बन गई है फिल्म तब आप उसके बाद आपको अप्रोच किया जा सकता है, राइट? सो और जब हम आपको अप्रोच करते हैं तो किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के बारे में फिल्म मेकर को पता होना चाहिए? देखिए, आज की डेट में म्यूजिक राइट्स हो गया, OTT राइट्स हो गए, डिजिटल अपना सैटेलाइट राइट हो गए, ओवरसीज राइट्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरेटिकल राइट्स तो है ही। अगर आप OTT पे जा रहे हो, OTT ओरिजिनल में जाता है तो फिर आपका थ्योरेटिकल तो खत्म हो जाएगा, बाकी सब राइट्स OTT के पास चले जाएंगे। अगर OTT के पास जाता है तो वो सारे राइट्स उनके हो जाते हैं जी। और थिएट्रिकल में कैसे होता है? थ्योरेटिकल आप अगर जैसे अभी किसी ने, आपने फिल्म बनाई, बनाने के बाद किसी OTT को पिच किया तो OTT भी पहले ये बोलता है कि आप थ्योरेटिकल होकर आइए, थ्योरेटिकल रिलीज करके आइए। पिक्चर का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आपको वहां भी प्राइस अच्छा मिलता है। थिएटर अभी भी मेन मुद्दा बना हुआ, थिएटर मेन मुद्दा है। थिएटर में पिक्चर का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, अच्छी फिल्म बनेगी तो रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, राइट? कंटेंट वैल्यू जरूरी है, कुछ भी उठा के बना दोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्टोरी या कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो ऑडियंस के करीब तक जाए। आपकी पिक्चर देखने के लिए अगर कोई थिएटर में आता है या कोई YouTube पे हो गया या किसी भी चैनल पे हो गया, उस पे आपकी पिक्चर को देखेगा, वो तब देखेगा जब आपके कंटेंट में दम होगा, नहीं तो कोई क्यों देखेगा? तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप बना क्या रहे, वो मैंने उस पर वर्क करें, अच्छा मेकिंग करें तो हर कोई देखेगा। बट मिस्टर स्वामी, बनाने वाले को तो हर एक को ही लगता है कि वो अच्छा बना रहा है, उसका टॉपिक बहुत खास है। आप अगर फिल्म मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एक जना का जो टॉपिक होता है उसको तो लगता है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी, बहुत जरूरी स्टोरी है, इसको बाहर आना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए। तो क्या सपोज आपके इतने अच्छे जर्नी में आप कुछ एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं कि क्या है जो अच्छा कंटेंट है? तो आपने बोला क्लोजर टू द ऑडियंस, जो ऑडियंस को टच करे, राइट? सो वो क्या हो सकता है जिससे कि सुनने वालों को पर्सपेक्टिव मिले? देखिए, जब किसी कहानी पे वर्क होता है तो सोलो वर्क करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि घर में पिक्चर देखनी नहीं है, खुद को देखनी नहीं है।
जब वर्क करना हो तो अपने अगल बगल के हर तरह की ऑडियंस के वो कहानी का एक बार नरेशन होना चाहिए। ऑडियंस को अगर समझ में आती है तब उसके आगे आगे जाना चाहिए। ये मेन कॉन्सेप्ट है फिल्म का। क्योंकि तरह तरह की, जैसे राज कपूर साहब करते थे, आज क्यों उनका नाम शोमैन के नाम से लिया जाता है? तो ये चीज आज भी लागू होती है कि हम भिन्न भिन्न तरह की ऑडियंस, क्योंकि लास्ट डे जनता जनार्दन ही है जो जजमेंट देगी आपकी फिल्म को कि भाई कैसी है कैसी नहीं है। चाहे ओटीटी हो, चाहे एंड्रॉयड हो, किसी भी फोन पे भी आप देख रहे हैं, टीवी पे आप देख रहे हैं, तो जनता का ही ओपिनियन आता है, वोटिंग वहीं से मिलेगी आपको। तो इसका मतलब हुआ कि मासेस के लिए बनाया जाए। यस। और मासेस हमको अपने आसपास से दिख जाते हैं। बिल्कुल। सो यानी कि फिल्म मेकर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो जिस भी टॉपिक को सोच रहे हैं वो ये उसको विजुअलाइज कर पाए कि क्या मेरा पड़ोसी इसको देखेंगे, क्या मेरे फैमिली वाले इसको देखेंगे, क्या मेरा स्टाफ इसको देखेगा। जी। राइट। सो इससे एक और अटैच्ड एक टॉपिक है कि जो निश सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, यू नो, या फिर जो थोड़े से जो कहा ही जाता है कि ये मासेस के लिए नहीं है ना, क्योंकि ये टॉपिक आपका अभी शायद टाइम नहीं आया है, ये अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है। तो फिल्म मेकर कुछ ऐसे होते हैं जिनका माइंड उसी तरफ चलता है, उनको मासेस वाली चीज में नहीं उतना क्लैरिटी आती है, राइट? वो किस तरह से अपने आप को पोजीशन करें? देखिए, वो तो जब मासेस के अलावा जब पिक्चर आप 10% 20% ऑडियंस के लिए आप क्रिएट करते हैं तो उस पिक्चर का एक अलग जोनर होता है। उसके लिए आपको वर्क करके आपको आना है। देखिए, उसके लिए भी थ्रेटिकल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो उसका वर्क आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि एक जब इंटेलेक्चुअल किसी कॉन्सेप्ट को उठाया जाता है तो उसके लिए जो क्रिएटिव टीम में जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो अपने आप में डिसाइड करें, क्योंकि मास तक तो वो जाती नहीं है, मास आता नहीं है। वो मैन टारगेट रहता है, मैन ऑडियंस के लिए 10% ऑडियंस का टारगेट रहता है, तो उसमें आप वो सोलो वर्क कर सकते। सॉरी फॉर माय थ्रोट गाइस। सो बेसिकली अगर आप निश कंटेंट बना रहे हैं तो उस कंटेंट के हिसाब से आपको ऑडियंस सोचना होगा कि इसको देखने वाला आपके अलावा और कौन है जी, उसके जैसे लोग कहाँ हैं और वो कहाँ पे कंटेंट व्यू करते हैं, कहाँ पे, वेयर आर दे वाचिंग द कंटेंट, एंड देन उस कंटेंट के हिसाब से उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जो उस तरह के कंटेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। परफेक्ट। सो आई एम सॉरी, रियलमी, ये आपके फोन का नाम आ रहा है, बट मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज अपने रियल नाम डालिए यहाँ पे, वरना मिस्टर स्वामी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। एनीवे, सो किसी ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन वर्क आपके शुरू से और बनने के बाद तक चलता है। आप अगर शुरू से डिस्ट्रीब्यूशन के संपर्क में रहते हैं तो कंटेंट पर अच्छा वर्क किया जा सकता है। अगर बनाने के बाद आप जब फर्स्ट कॉपी आउट करते हैं, टीचर काटते हैं, कमर्शियल्स काटते हैं, तो उससे डिस्ट्रीब्यूटर का वर्क काम चालू होता है। जिनका ये क्वेश्चन था, क्या आपके लिए क्लियर है? डू यू हैव एनी लीडिंग क्वेश्चन टू दैट? ओके, बाय द टाइम यू सेंड इन, सो मिस्टर स्वामी, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो आपके पास बहुत सारी फिल्म्स आती हैं जो कि सामने से आती हैं, जिनको आपने अप्रोच नहीं किया, सामने से आती है। आपके क्या क्राइटेरियाज होते हैं सेलेक्ट करने के कि ये, पहले तो ऑब्वियसली कि ये आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पिकअप करोगे भी कि नहीं करोगे, तो वो आपके क्या क्राइटेरियाज होते हैं? दूसरी बात कि वो आप कौन से मार्केट में उसको फिट मानते हो, कहाँ के लिए पिच करोगे, ये आप कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए मैम, ये हम देखने के बाद ही डिसाइड करते हैं, और हम जो पिक्चर रिलीज करते हैं मास को टारगेट करते हैं। ओके। मैंने अभी तक 10% ऑडियंस का कोई टारगेट नहीं लिया, ना मैं चाहता हूं उसमें। मेरा सीधा टारगेट मास को रहता है। कोई हिट है तो फिट है, चलेगा तो पैसा आएगा, नहीं चलेगा, ऑडियंस नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा। राइट। और मासेस में तो ओटीटी भी मासेस को केटर करता है, थिएटर भी केटर करता है। तो अगर आपके फर्स्ट चेकलिस्ट में क्वालिफाई हुई फिल्म आपको लगा कि मासेस के लिए करेक्ट है, अपील है इसमें मासेस वाली, तब आप फिर सेकंड स्टेप में कौन से डायरेक्शन में इसको लेके जाना है, उसके लिए क्या आपका चेकलिस्ट रहता होगा? थिएटर।
देखिए अगर पिक्चर समझ में आती है कि मास के लिए, तो पहले थिएटर में जाना जरूरी है। थिएटर के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म आता है। जैसे पहले आप सैटेलाइट देखते थे, टीवी पे देखते थे, अब वो ओटीटी ने वो ले लिया। जैसे होम वीडियो, घर में डीवीडी लाके आप लगा के देखते थे, अब वो ओटीटी ने वो वर्क ले लिया। आप अपने फोन पे वो फिल्म देख सकते हैं। अब पहले ओटीटी डायरेक्ट स्ट्रीमिंग करता था, अब ओटीटी ने वो क्राइटेरिया भी चेंज कर दिया। अब ये है कि पिक्चर बनाइए, अच्छा कंटेंट है, अच्छी वैल्यू, तो आप रिलीज करके आइए। जो पिक्चर का रिस्पॉन्स होगा उसके हिसाब से वो पैसा देगा। थिएटर में जब पब्लिसिटी स्टार्ट करने के साथ से और रिलीज तक, रिलीज जिस दिन थिएटर में ओपन हो रही है उससे पहले, उसके बीच में पिक्चर को सेल आउट आप कर सकते हैं किसी भी ओटीटी को। जो डिजिटल सैटेलाइट जो राइट्स है उसके, ऑल इलेक्ट्रॉनिक राइट्स, वो आज में ऑल इलेक्ट्रॉनिक राइट्स डिजिटल लेता है, तो वो आप सेल कर सकते हैं रिलीज होने से पहले। रिलीज होने से पहले। रिलीज होने के बाद पिक्चर फ्लॉप हुई, डिजास्टर हुई, तो प्राइस भी डिजास्टर हो जाएगा। राइट। सो आपके अगर थिएटर में डील फाइनलाइज हो भी गई है, लेकिन और वो रिलीज होने में कुछ एक टाइम पीरियड रहता है, तो अगर रिलीज नहीं हुई है तब तक आप बाकी डिजिटल के ओटीटी के डील्स बना सकते हैं। दैट्स व्हाट यू सेइंग? यस, उस दौरान जब आप पब्लिसिटी स्टार्ट हो चुकी हो, जब पब्लिसिटी होता है ना, ट्रेलर, प्रोमो, सोशल मीडिया, अदर आउटडोर, ये इस पर जब आपका वर्क होता है, उस दौरान आप अपनी फिल्म की बात कर सकते हैं। कोई चैनल एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अभी डायरेक्ट आपने पिच की, डायरेक्ट फिल्म बनाई, तो डायरेक्ट किसी ओटीटी को पिच की, तो वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। तो पब्लिसिटी के दौरान आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि अवेयरनेस हो जाता है, ऑडियंस जान चुकी होती है फिल्म। और पब्लिसिटी अच्छी हो, इसके लिए एक फिल्म मेकर का खुद का इन्वॉल्वमेंट कितना इंपॉर्टेंट है वर्सेस एक प्रोफेशनल एजेंसी को सौंप देना बेटर है, जिनको पूरा एक्सपीरियंस है इस चीज का? नहीं, मेरा मानना यह है कि इन्वॉल्व रहे प्रोड्यूसर। जब इन्वॉल्व नहीं रहता तो वो काम नहीं होते, प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं हो पाती, पब्लिसिटी नहीं हो पाती। प्रोड्यूसर को, क्योंकि लास्ट डे पैसा डिस्ट्रीब्यूटर लगाए पब्लिसिटी में, रिलीज पब्लिसिटी में, या प्रोड्यूसर लगाए। ऐसी स्थिति में पैसे का सही यूज होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कदम से कदम मिलाकर रहना चाहिए। राइट। सो फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एक ही टीम है। सो जैसे मिस्टर स्वामी ने शुरू में कहा कि या तो आप कॉन्सेप्ट स्टेज पे ही अपनी टीम डिसाइड कर लीजिए, मतलब ऑब्वियसली पिच कर लीजिए, और फिर सबको अगर समझ में आता है देन यू बिकम अ टीम। तो उस टाइम पे आपका फिल्म का डायरेक्शन क्या होगा, उसमें कितने पैसे लगेंगे, उसको कैसे कौन से मार्केट में स्ट्रैटेजाइज किया जाएगा, ये पूरा एक टीम की तरह हो सकता है। या अगर ऐसा पहले नहीं बन पाता है, देन ऑफ कोर्स जब फिल्म बन जाए देन रीच द डिस्ट्रीब्यूटर, बट फुल्ली इन्वॉल्व रहिए। बिकॉज आपके इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से, बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मैं कई सारे फिल्म मेकर्स को जानती हूँ जो इस स्टेज पे अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो नहीं कर पाएंगे जस्टिस टू द पब्लिसिटी पार्ट, नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता है, तो छोड़ देते हैं, और डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स भी हुए हैं लोगों के। बट गुड टू नो कि आप बोल रहे हो कि वो जस्टिस नहीं हो पाता है अगर प्रोड्यूसर उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता है, इवन एट द पब्लिसिटी स्टेज। और अगर पब्लिसिटी आपकी वीक रही तो आपकी बाकी के मार्केट्स में सेल होने की चांसेस उतने ही ऑब्वियसली वीक हो जाते हैं। जितना उसके बारे में बात करा जाएगा उतना ऑब्वियसली आपका बाइंग पावर बेटर हो जाएगा, सेलिंग पावर। ऑलराइट, सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ ट्रेलर्स अभी दिखाए जाएंगे, जो कि डेफिनेटली आपको ये सारा ऑडियंस जो 50 लोग इस वक्त देख रहे हैं वो देखेंगे, विच इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रोड्यूसर्स, राइट? सो नॉट टू मेनी, बट मैं एक जरूर रन करना चाहूंगी इस वक्त, एक पर्टिकुलर ट्रेलर। सो इफ my team can give me the host access, I will play that trailer, one of the trailers. Till then, Mr. Swami, एक क्वेश्चन ये है कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है फिल्म मेकर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट रिकवरी का ही होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर पैसा लगाता है, डिस्ट्रीब्यूटर अगर पब्लिसिटी में पैसा लगाता है, तो फर्स्ट रिकवरी तो वो अपनी पैसा तो सेव करेगा ही करेगा, राइट?
ठीक है ना। जब वो अपना पैसा सेव करेगा तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर का पैसा सेव होगा, ठीक है ना। अब उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर को, प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, क्यों मैंने बोला कदम से कदम मिला के चले, हर चीज में क्यूरियोसिटी जगाए, बात करे, पूछे कहाँ क्या हो रहा है, तो वो उसके लिए भी अच्छा होगा, उसका पैसा निकलने के लिए भी अच्छा होगा। कॉन्ट्रैक्ट तो सब यही होते, इलेक्ट्रॉनिक, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास रहता है आज की डेट में। नॉर्मल छोटी फिल्मों का ओके, और रिलीज जो पैसा लगता है वो फर्स्ट रिकवरी डिस्ट्रीब्यूटर की प्लस एक ROI होगा, जो भी एक परसेंटेज होता है, वो एक वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा कि कैसी पिक्चर है, क्या प्लेसमेंट देनी है, कितना पब्लिसिटी पे खर्च होगा, उसके बाद सब डिसाइड होता है, वो पिक्चर टू पिक्चर होता है। सो एक फिल्म मेकर जो आपके पास उस स्टेज पे आया है जब उसकी फिल्म रेडी है, यानी कि उसने अपना टाइम, पैसा, एफर्ट सब लगा चुका है, और आपको जो रेडी प्रोडक्ट दिख रहा है आप उसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो, राइट। तो फिल्म मेकर ने भी अपना बेस्ट दे दिया है उस फिल्म को ऑलरेडी, राइट। सो यहाँ पे वो अपने राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करे कि उसको बेस्ट मिल सके, फिल्म मेकर की तरह से सोच के बताइए। देखिए वहां यही तो प्रॉब्लम है। हम्म, प्रोटेक्ट तो तभी होगा जो पिक्चर अच्छी प्लेसमेंट होगी, ठीक है। देखिए किसी भी कंटेंट के लिए, किसी भी अच्छी चीज को आने के लिए या चलने के लिए, एक तो कंटेंट मैन होता है, हाँ, ठीक है, दूसरा मेकिंग मैन होता है, टेक्निकली कितना साउंड हो, तीसरा म्यूजिक होता है, चौथा आपने क्या पब्लिसिटी पर वर्क किया है वो मैन होता है, पांचवा आपकी प्लेसमेंट होती है कि आप किसी भी, अभी जैसे पठान शाहरुख भाई की फिल्म आई, आप उसके सामने लगा दोगे, जरूरी नहीं पिक्चर चल जाएगी। जैसे अभी गांधी वर्सेस गोडसे आई थी, राइट, आपने देखा क्या, तो वो पिक्चर अच्छी चल सकती थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी वो, मगर उस तूफान में वो भी निकल गई। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना होगा, पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फिल्म को बचाने के लिए प्लेसमेंट पे ध्यान देना होगा, पब्लिसिटी पे ध्यान देना। राइट। सो आई थिंक जो मैं टेक बैक कर रही हूँ मिस्टर स्वामी के इंटरेक्शन से, 2 थिंग्स। वन इज फिल्म मेकर्स को फोकस थिएट्रिकल रिलीज पे पहले करना चाहिए, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज पोस्ट पैंडेमिक आई थिंक हम लोगों ने OTT को बहुत एक अच्छा ऑल्टरनेटिव समझना शुरू कर दिया है, क्योंकि थिएट्रिकल बहुत बड़ी चीज होती है, ऑब्वियसली सबको नहीं मिल पाती है। सो OTT एक ऐसा मेकशिफ्ट एक बीच में से दिखने लग गया था कि जैसे इजी होगा, वहां तक पहुंचना इजी होगा, तो बहुत सारे लोग OTT के लिए खाली कंटेंट बनाने लग गए हैं और OTT को अप्रोच करने लगे हैं। लेकिन मिस्टर स्वामी का ऐसा कहना है कि थिएट्रिकल पे ही फोकस करो, क्योंकि अगर थिएट्रिकल के, ऑब्वियसली थिएट्रिकल मींस बेस्ट, राइट, जो थिएटर में जाएगा वो जाएगा तभी जब मास अपील की कंटेंट होगी, और अगर वहां पे थिएटर में चला गया तो पहली विन तो वही हो गई। दूसरी बात, अगर थिएटर में भी अच्छी चल गई, आपका प्लेसमेंट ठीक हो गया, आपकी पब्लिसिटी ठीक हो गई, ऑडियंस ने आके देख लिया, तो अब उसके बाद आपको बाकी के डिजिटल राइट्स और उसका लॉन्ग टर्म आपका OTT नेटवर्क में यू आर इन अ मच बेटर पोजिशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने के लिए कि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन ऑडियंस की व्यूइंग हैबिट्स और जो सिनेमा और स्टोरी का जो एक DNA है, जो एक नैरेटिव है, वो नहीं चेंज हो रहा। आज भी आदमी चाहेगा, आप और मैं भी चाहेंगे कि सिनेमा हॉल में जाके आराम से बैठ के देखें, क्योंकि ऑब्वियसली एक छोटी सी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर वो एक्सपीरियंस नहीं आता है। फुल साइज सिनेमा स्क्रीन्स नॉट इवन 1% लोगों के घरों में होती हैं। सो वी आर अगेन, हम अगर उस पर फोकस करते हैं तो निश 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 के ऊपर जाते रहते हैं। द बिगर joy of making cinema is the big screen. So focus your content, position your content. So leading question to that, Mr. Swami, is जो आपने बोला कि depend करता है, content के ऊपर depend करता है, सारी चीजों के ऊपर depend करता है, but एक फिल्म मेकर के point of view से guide करिए कि जो percentage होता है of the profit between the distributor and the filmmaker, what is a fair percentage जो कि एक फिल्म मेकर अगर उसका सब कुछ अच्छा है तो वो मांगने की हिम्मत कर सकता है? देखिए आज की डेट में डिजिटल का जमाना है, सब फेयर होता है। जो डिजिटल पैसा आता है, जितने भी मल्टीप्लेक्स चैन है सब डिजिटल है। अभी डुप्लीकेट टिकट नहीं फाड़े जाते, पैसा नहीं दिखे। एक चीज बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। जब बारिश होती है ना, नॉर्मल बारिश होती है तो पता नहीं चलता पानी भरा है नहीं भरा, राइट।
जबरदस्त बारिश होती है तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि पानी बहुत भरा हुआ है। तो ऐसी पिक्चर जब हिट होती है तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि मेरा शेयर बन रहा है, मेरा पैसा निकल रहा है। तो दिखना भी चाहिए। लोग गलती करते हैं, देखिए इस हर प्रोफेशन में गलतियां होती हैं, लोग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रोड्यूसर भी अच्छी चीजें नहीं बनाते हैं। अब पैसे के बल पे जब पैसा होता है आदमी के पास तो वो सोचता है कि मैं कुछ भी बनाऊंगा चलेगा, पर वो नहीं होता। ऑडियंस जजमेंट लेती है। जो 50 रुपया देता है वो देखना चाहता है आपने बनाया क्या। पहले ऑडियंस इतनी जागरूक नहीं थी, टेक्निकली इतनी साउंड नहीं थी, आज टेक्निकली बहुत साउंड है। राइट। आप हम फिल्म मेकिंग इतना दिखा चुके हैं ऑडियंस को, वो जानती है पिक्चर को बनाया कैसे जाता है, कैसे टेक होता है, किस तरह का कैमरा मूवमेंट होता है, वो सब जानते हैं। तो अच्छे लेवल की फिल्में बनाइए, जो अच्छी आ रही है वो चल रही है। परफेक्ट। और सॉरी मैं अभी निकलूंगा मैम, मेरा कहीं मीटिंग है, उसके लिए सभी को जय श्री राम। मैं फिर कभी ज्वाइन करूंगा, ठीक है? एब्सोल्युटली। नहीं, एंड अभी हमें रितेश जी ज्वाइन करेंगे, तो आई थिंक वो आपके बाद में वो लीड कर लेंगे। एब्सोल्युटली, या नहीं, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। एंड आपके लिए जितनी भी इंक्वायरीज होंगी आई विल फॉरवर्ड इट टू यू। ओके, थैंक यू। Perfect. Okay, guys, so it's time to see one of the trailer that our team has selected for all of us to view today together. So let's watch it now. Guess what's back? India's Excuse biggest the ad. festival, Urban Company Saros Bukran. New L'Oreal Paris Glycolic Bright Serum visibly reduces 5 years of dark spots in 2 weeks. That was a wonderful trailer indeed. What do you all think? Chat. Really nice trailer. Nice one. Fantastic. Beautiful. Dharam, I didn't make it. All the credits go to Nagesh. So Nagesh, really, really well made. Absolutely. It's very beautiful. Nagesh, hats off. Would love it if you can unmute yourself, Nagesh. Yes, ma'am. Thank Hi. you. How are you? Fine, ma'am. Beautiful. Is the film complete? No, I will tell you. This is actually my friend directed movie. I am the producer basically in Canada. Yesterday, I watched this movie with our ex-CM, Mr. Yediyurappa, and Health Minister, Deputy CM Ashwath Narayan here in Canada. Such a wonderful movie. A wonderful movie. Yeah. You can't imagine, even in this movie, because I produced 3 movies, it is a different movie. You can't see any double meaning dialogues, no expose, no fights. Okay, everything is 100 out of 100. It is, I can say, in 2023 in Kannada film industry, this is the best one movie. Wow. Now he is very close friend of the director. He is pitching this movie for some OTT and other thing. Right. Okay, this is the second movie for him. So first movie also he got the national award. Okay, this is the second movie. He did very brilliant, ma'am, and even everyone happy. But here also we are facing the problem is audience. The people, they are not going much to the theater. Such a wonderful movie. That is only the reason. Really, it is a upset in one way, because small and medium movies, even the good movies, the people are not watching in theater. It is a very unfortunate nowadays after this pandemic, and big star movies, it's okay. Like this kind of good movie, we have to encourage. Sonia, ma'am. You are absolutely right. And I think our next guest is going to throw a lot of important light on exactly the same topic. But yes, I remember one conversation with Mr. Swami earlier, where he said that for
people to go to the theater, cinema, the theater has to be affordable by the masses, right? The cinema theaters are right now not affordable to many people, the masses. You know, if you make the ticket of 150, 200, 250 rupees, and then the popcorn of so many more rupees, and etc., etc. So like the common people are not going to be able to really afford it ongoingly. Yes, Sonia, it's right. Because see, if we put 999 rupees, we can see hundreds of movies. Yeah. So one exactly. movie, we have to pay 3,000 rupees if you go with the 4 people. Yeah. Okay. But my question is, small and medium movies, right? Nowadays, it is very difficult. That is only my point. Thank you. No, absolutely. I totally, and you know, like, I don't know, were you there for Malhar Film Festival? No, you were not, right? Sorry. Were you there for our Malhar Film Festival? Were you there, a part of the festival? No, this is the first time I am attending. Okay, sure. Yeah. No problem. Okay. So we had a lot of discussions around this, and I think the one solution to what you are saying, which is everybody's issue also, is to have a very rich distribution network and access to a distribution network. You know, because while like Mr. Swami said, that make the film for the theaters, but even if you make the film for the theaters, and the trailer that you're showing is brilliant, but your problem is that people are not going to the theater, right? This is not only for one movie. Yeah, as per sure. my knowledge, I am learning from Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam, Hindi, North Indian, other languages. See, small and medium movies, even they are not counting the amount, leave it the first copy. Theatrically, we have to put more than 15, 20 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs. Yeah. Even we are getting a small amount of 3 to 4 lakhs. Yeah. Okay. Almost 90% movies, we are not getting anything. That is the major problem. Right. Yeah. You can. So let's totally. And I think the point जो आप point बोल रहे हो नागेश जी, ये इतना valid है कि I think यहाँ पे कोई भी जना जो है उससे disagree नहीं करेगा. Right? Now let's use today's time to make it better, to go forward from here. Right? So Thank you. Most welcome. Thank you for sharing such a wonderful trailer. Thank you. Thanks. So I think for everybody's convenience, let's just look at what did we discuss. We heard again and again, what we are hearing is content is king, story is everything, make things for the masses, make things which the soul connects to. I'm sure we all know that, right? And like I asked Mr. Swami, that everybody thinks that wo acha hi topic bana rahe hain. Nobody thinks that they are making anything which should not be made, right? उसमें उन्होंने एक क्यू दिया कि make things जो कि आपके पड़ोस वाले देखना चाहेंगे, make things which your friends and family would be keen in watching. So just do that. I think जब हम content बना रहे होते हैं, 5 मिनट के लिए step back and take feedback. Don't send everything to the distributor or the producers only, because they will obviously come from a market study, market profit loss calculation also, जो कि शायद आपको पूरा नहीं समझ आएगा. So first, be very sure of your content by sharing it with as many people as you can before calling it a final copy that you are sending it to other people, right? That's for point one. Second is, आपके पास बहुत अच्छा network होना चाहिए to send it to as many people as you can, because it's all like a marriage. It just meeting one distributor or producer doesn't mean कि उन्होंने पसंद किया या नहीं किया. That is the fate of any creative process. It can never be, right? So you need more and more and more and more people, right? How do you get to more and more people? Tough one. I also don't have a very simple answer to that, but I mean, जैसे हम effort कर रहे हैं, I'm sure there are other organizations also which are trying to connect the dots. So making a thick community of like-minded people, जो आपको कुछ पता है वो आप हमारे साथ शेयर करो, जो हमें पता है हम आपके साथ शेयर करें,
that is what is going to take the independent filmmaker community, which is a thin community, to a more dense community of like-minded people, right? So like we showed you this trailer today. Why did we show? Because now this one trailer of that Mr. Nagesh shared is known to 50 people here, जो कि अभी तक हमारे लिए नहीं था, हमें नहीं पता था, right? Now 50 people know about this film. Can 50 of us talk about it? Can we promote it in our own network? So let's bring in our next guest, who is going to throw in more light on exactly what Nagesh mentioned. It's about taking our content to the audience, bringing the audience to the film, wherever the film is being played and published. And remember that our discussion here right now is about कि आप अपनी filmmaking journey में जिस stage पर हैं, उससे next step के लिए इस पूरी conversation को सुनिए, because final step can be many steps ahead, right? So even if in today's interaction we can move to the next step, that's great enough. All right. So with that, I would like to invite our second and a very, very important guest, Mr. Ritesh Sharma. He is a producer and also the partner at AS Pictures and Entertainment with Mr. Swami. बहुत साल का experience है इनको as a producer, director for various formats, for OTT, for web, for theater, in short films, in long formats, you name it, right? And again, it is a privilege. It is my honor to invite Mr. Ritesh. I have known about his work for many years now. And the discussion that we are having today is कि एक producer director जो कि एक story बताना चाहता है, exactly like all of you, but has to also find a distributor in the market, has to also find an audience in the market, and has to work in regional, national, and international formats. वो क्या process follow करते होंगे? क्योंकि अब तक काफी कुछ बना चुके हैं, so there is definitely something to learn from his own process. So let's welcome Ritesh Sharma. Hi Ritesh, welcome to Foreground. Can you please unmute yourself? Am I audible now? Yes, please. Welcome. Everybody, good evening, Sonia. Good evening. How are you? I'm doing fine. How are you doing? Very well. Very excited. I think the interaction is at a very fast-paced manner. I'm very excited to bring you in exactly at this point because ये वही वाला point है जो हम discuss कर रहे थे और जहाँ पे आपकी पूरी expertise आती है. I think आपने Mr. Swami को सुना और हमारे filmmakers के questions को देखा सुना. Ritesh, I'll jump in straight to a question. I'm extremely sorry I couldn't listen to that because I was having a very important meeting. No problem. I joined actually a minute back. Okay, no problem. So I'll give you a quick recap. But basically the discussion here is Mr. Swami said, make the film for the masses, make it for the theater. And before the release into the theater, approach the digital market, right? And get your second inning solid. Then practice and perform better at publicity, publish your film, do the right PR, be involved in the whole film, make like a good package out of that. That's what Mr. Swami basically shared. And we just now saw a very good trailer, which was shared by Mr. Nagesh. Fantastic story quality, production quality, camera, lighting, sound, music, awesome, right? But what Mr. Nagesh shared about this film itself would be, and most of these films is, कि audience तक पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि audience theater में जा ही नहीं रही है. Audience जो है वो अपने मोबाइल स्क्रीन्स पर बिजी है और थिएटर तक जा नहीं रहे हैं. अगर ऑडियंस थिएटर तक नहीं जा रहे हैं तो थिएट्रिकल बनाने का फायदा क्या है और थिएटर में खरीदेगा कौन, राइट? सो दिस इज व्हाट इज कवर्ड राइट नाउ. नाउ वी हैव अ लॉट मोर क्वेश्चंस जो कि हम आपके साथ में लेते रहेंगे. बट माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर एंड हु क्लोजली वर्क्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आपका प्रोसेस क्या है of making a film that will go through the distribution, will go to the market? As per my experience, I would say first we go for a content which I like. It can be of any genre. I'm never genre specific. It can be action, it can be horror, it can be romantic, it can be political drama, it can be comedy or anything else.
First thing, there is a grammar of every script. I go for that grammar first. Right. First, at the very first stage in the synopsis itself, we understand that whether the grammar is good or not. If the grammar is okay, or grammar means not that kind of grammar. There is a grammar of script, you can say. Right. Or in a technical manner, which cannot be explained by words. You come to understand once you read the synopsis. And if I like the synopsis, I go for the script. If there are some changes, I do that changes. Otherwise, if it's okay, we go for that script. And then we go for the star cast, which star cast is going to suit the best. And as far as my experience, I know that which star cast is going to give us what kind of profit or what kind of revenue in the market. So according to that, only I plan the budget. Okay. Should not be over budget. It should not be so less that it could not be completed. We have to be very practical. Not expect that you can make the movies in some few lakhs and you make billions of money. That's not possible. It can be 1 in a billion case, but not every movie can be done. So on an average basis, we should know that a movie can earn you the profit of approximately 40 to 60% on an average. Okay. You should not expect twice or thrice the amount of the money which you are investing. It can be 35 to 50, 60%. That is the average recovery you can say you can expect from your any movie. So an average 50% is safe to assume. Yeah, it should be about 20%, 25%. Okay. Because when we calculate the interest also, it should be about 25%. I mean, once we are getting recovery of 125% overall, that 25% is the profit, you can go with that. Do we assure that thing first of all? Sure. But we actually first check that which all actors are having what kind of value in the OTT market. OTT market is going to give you a fixed price, depending on star cast first. Then they will watch the movie. If it is technically sound, then they will pay you that much money. Actually, there is no good or bad film. There is only technically good or technically bad film. How will you define that a movie is a good? I mean, some movie you can like it, I may not like it, or I may like it, you may not like it. Absolutely. Some people like action movies a lot, others do not like at all. Yeah. Some people like romantic films a lot, some are just opposite of that. So Right. we can be very good for you and very bad for the other person, and vice versa. Yeah. So you cannot define ever that what is a good film or a bad film. Only a good film or bad film you can define is what is the grammar of that script and how technically sound that movie was been shot and edited. That is only the criteria. If you have written a proper script in a proper grammatical manner, and you have shot it in a proper technical way, technically sound way, and edited in a proper manner, and the movie is good, it will give you at least 125% profit or more than that. Awesome. So 125, let's say, is a very fair calculation. 100% recover, 25% profit. Yeah. अब ये जो 25% profit है from the interest of a filmmaker, जो कि आप खुद हैं, what is a fair distribution between a filmmaker and the distributor? I didn't understand. Please come again. From a filmmaker point of view, आप हैं जिसने वो फिल्म बनाई है, बट डिस्ट्रीब्यूटर है जो उसकी पूरी प्रमोशन करेगा, पब्लिसिटी करेगा, उसको थिएटर तक लेके जाएगा, ऑब्वियसली उस पे पैसे लगाएंगे, राइट? तो वो तो रिकवरी तक बात हुई, 100% is only recovered. Now the 25%, which is the profit at least, right? What is a fair percentage कि एक फिल्ममेकर जो मांग सकता है, मांगना चाहिए उसको, it's a fair percentage कि डिस्ट्रीब्यूशन का effort भी आपने acknowledge किया, not to undermine that, but as a filmmaker, you are the person who created that film. So what is the right percentage for a filmmaker to stand for? Are you talking that, are you asking me the question that how much we should ask from the distributors? Yes. Actually, distributor doesn't pay that way. Okay. Charge from 10% to 25%, 30% or something like that of the revenue being generated for the producer share. I mean, the producer share is what it has been deducted after the GST being paid of the tickets and the
exhibitor share. Suppose What is an exhibitor? exhibitor means the cinema hall wallahs, Okay. cinema hall owners. Okay. And normally there is a ratio of 45 to 55%. It depends from cinema hall to cinema hall. Okay. Approximately 50-50 ratio is there. If a movie is earning 100 crore, you can say that okay, approximately 50 crore has been given to the cinema hall owner. That is known Exhibitor. Okay. as. After that 50%, deducting that 50%, a distributor will charge 10% to 20% of that 50%. Got it. Let's say Okay. you have earned 100 rupees, 50 rupees has been given to the exhibitor. And Yeah. out of that 50 rupees, 5 rupees have been given to 5 to 10 rupees have been given to the distributor. Distributor. And then Sure. the amount which is remaining is 40 rupees is the producer share. Okay. This is how it works. Perfect. So that's like a great summary, I think. I think this is what all of you were asking, right? Any leading question to that before we move on? The share calculation? I mean, you can say that everybody should know that a producer share is approximately 35 to 40% of the revenue being generated in the market. Like you have been reading that this movie has done 100 crore business or 200 crore business. You Right. can say that approximately 35 to 45, between 35 to, it will vary. So 35 to 40, ideally a producer will receive as his share. Right. So basically, if you are the producer, then this is what you should plan for. Yes, If you are yes. partnering with the producer, you are a director and you have another producer, तो वो जो 40% बचा उसमें से अब आपका शेयर आता है, you know, so that now depends कि producer ने कितना involvement करा है, आपका कितना involvement है. You should consider that 40% as 100% between the partners. Right. That's your 100%. Now you do your deal depending on your relationship with them. So ये अब एकदम funnel छोटा हो गया. From a very large market, the first guy being the exhibitor, like what Dharam said, that of course the exhibitor or the cinema hall owner is of course most important person. वही दिखाने वाला है. मना कर दे तो मना कर दे. क्या कर सकते हो? You know, so they are obviously very important. So they take the premium 50%, and in that 50%, Ritesh, does that also involve the marketing and the publicity cost that the cinema buyers do? Different thing actually. Marketing is a different thing. That is mostly done by the distributors. Like if a distributor is investing in the P&A promotion, actually earlier it was known as prints and advertising. Now it's all the movies have been released digitally. It's not been released in the real format. So there are prints right now. So it is called as promotion and advertising. Right. Or you can say PNR, promotion and release, I would say. So if a person is investing in that PNR, they are coming on the basis of last in, first out. Invest, suppose a movie is of 10 crore, let's say, for example, and that person is investing 5 crore. Right. PNA. Right. Okay. So first he will recover his own 5 crore and he will move ahead. And then the rest of the part will be shared by you only. It's yours only. Perfect. So we will come, ye mathematical calculation broadly we have covered, and of course we can go in much more detail. But let me shift the attention to the part of artist in this whole thing. आपने रितेश mention किया कि आपके पूरे process flow में जब आपका एक broad concept बन जाता है, then you look at the star cast or the main people who will be leading the story, right? So star cast से क्या मतलब है? क्या ये star cast मतलब वो 10 branded very awesome artists who are there? अगर हाँ तो सब लोग तो उनके साथ काम नहीं कर सकते. So what do you mean? काम नहीं कर सकते. There are hundreds of filmmakers, hundreds of films being made and released every year. It is practically not possible for those actors also to work with each and every producer. Right. And each and every producer cannot afford them. It's not about 5 or 10. You can say around top 100. I mean, people, some who have done web series, who have done TV serials, who have a market, a OTT market. Nowadays, we calculate a star cast value from their OTT market. How much we can get if we are taking so and so person as an actor.
how much recovery we may get from the OTT. That's a technical thing and a bit secret also. So not everybody can know that, and it changes every day, you can say. Like a stock market. Yeah, kind of. Not so fast like a stock market. Yeah. In every few months. Today's an actor might be having the value of, let's say, 3 crore of the OTT market. Tomorrow it might be having 1.5 crore. And day after tomorrow, if any of his film gets hit, it can be going more than 10 crore also. So it changes from time to time. So we have to look after all those things. Got it. So आप कह रहे हो कि स्टार कास्ट से मतलब obviously not the top 10 people, but something known, मतलब कोई experience होना चाहिए. Tell me, are you going to watch a movie of any newcomer? Normally a crowd puller, why we call an actor, a hero, a crowd puller? After watching his face, you are going to watch that movie. Right. Sure. I will give you a small example that 2 years back when Pushpa was released, actually, coincidentally, I was so busy that I couldn't watch even the trailer. I couldn't watch even the poster also. I didn't know that who is the hero of that film. I went to my relatives' home for some vacation. They just asked me their new South movie has been released in Hindi dubbed version. Would you like to watch? I said, who is the hero? They told me it's Allu Arjun. Allu Arjun, okay, chalo chalte hain. I didn't see the poster, I didn't see the trailer, nothing. I just heard the name Allu Arjun. I just went and watched the movie. The movie was very good, but I didn't know about the movie at all. Like, as soon as I heard the name Allu Arjun, I went to watch the movie. If he would have said me some new person's name, I don't know who is that person. We'll see. First, let's go and see some trailer and know whether I like it or not. I could have said no also. But because that person is been known to the people, he is a crowd puller. It's just an example of Allu Arjun, and it can be some people, some other people also, like Mohit Raina, who has played the role of Shivi in Harar that Mahadev serial, or there can be so many other persons. If people know your face, they will come to you easily. It doesn't mean that if a person is unknown, he won't be entertained at all. It can be, but obviously, chances are lesser. It does matter. Yeah. Value does matter. Perfect. So this is what we're talking about, is the process where a concept leads to a character. उस कॉन्सेप्ट को ड्राइव करने के लिए ऑब्वियसली आर्टिस्ट चाहिए, एक्टर्स चाहिए, बाकी सारा एंसेम्बल चाहिए जो कि एक्चुअली स्टोरी को आगे लेके जाएंगे. उसमें रितेश इज सेइंग कि वो नोन फेसेस हो तो बेटर है, एंड नोन डज नॉट ऑफ कोर्स मीन द टॉप 10 आर्टिस्ट, बट नोन, जनरली नोन, राइट? तो वो ओटीटी में हो सकते हैं, थिएटर में हो सकते हैं, नॉर्मल टेलीविजन चैनल्स पर हो सकते हैं, कहीं तो होगा जहां से बेसिकली आपका ऑडियंस और आपका प्रोड्यूसर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर उसको पिकअप करेगा कि अच्छा ये एक्टर, अच्छा ये वाले वो वहां पे किया है, एंड दैट इज वेयर ये कम्युनिटी उसका प्राइस एस्टिमेट कर पाएंगे कि ओके, बिकॉज ये वो आर्टिस्ट है, उसने वहां पे काम किया है, probably this is what the film could be budgeted like, and that helps into that. Of course doesn't say कि नए लोग नहीं कर सकते, नए लोग कभी ना कभी नए होते हैं, हर एक जना कभी ना कभी नया होता है. There is always a first and a second time, so that's totally okay, but chances are lesser. So now I have a question for all of you as filmmakers in the audience. आप लोग डेफिनेटली किसी ना किसी फिल्म पे काम कर रहे हो, या बना चुके हो, या बन रही है आपकी. तो आप अपने एक्टर्स तक कैसे पहुंचते हो? Actors, singer, dancers, musicians. What has been your strategy to get to the drivers of your story? So raise your hands and we will have 3 people share your process here. Anybody? Please raise your hand, whoever wants to share your process of reaching the creator. The strongest person behind the creation called content is the creator. So how do you go about it? Okay, Vinayak, go ahead, please. So usually, like, I am more involved in ads and all. So I have directed and produced few ads. So let's just say if I have worked with somebody, or if I have like seen somebody in casting, because usually there's a casting director involved. Yeah. So if I've seen somebody or seen someone's intro in the casting, then and if I could recall that person, because if it's a good actor, you'll always remember that person, or maybe somebody you'll know via somebody, because obviously if you want to cast a bigger star or a bigger actor, obviously
if you're working in the industry, you'll know some people, or you will know some producers who have worked with certain people, so you can get the content. So that is my process. Yeah. And there's always a casting director who can help. Perfect. Got it. Thank you, Vinayak. Ashutosh. Okay. Hi. Am I Hi. audible? Yes. Yeah. So I'm just amateur. Means I write stories and scripts, and also recently I produced my short film, and also I'm writing other things. So actually, what I do when I write, I keep in mind the people. I watch people. Can't hear you, Ashutosh. I think you're. Ashutosh, we can't hear you. And then I cast like those actors or someone like them. Yes. Okay, very interesting. So when you say that, आप बोल रहे हो कि हम नजर रखते हैं कुछ लोगों के ऊपर, ऑब्जर्व करते रहते हैं लोगों को, या तो आप उनको कास्ट करते हो या उनके जैसे किसी को, राइट? तो ये उनके जैसे वाले तक कैसे पहुंचते हो? उनके जैसे मतलब जैसे उन जिनको देख के मैंने लिखा, उनके जैसे मतलब वो बिहेव कैसे करते हैं, लाइक उनके लाइफ के इमोशंस वगैरह रहते हैं कुछ सिचुएशन में, मतलब पहचान के रहते हैं, या फिर उनके कंटेंट दिखते पहले के पुराने, उस पे भी डिपेंड रहता है. परफेक्ट. राइट. शांतनु, थैंक यू. Yes. For my case, actually, my first film was basically a crime thriller, history-based mystery, I can say it. So, in my case, हम जब स्क्रिप्ट शुरू किए थे या पहले जब स्टोरी आइडियाज कंसीव किए थे, तभी मेरे ध्यान में कुछ रेफरेंसेस था. आई मीन बीइंग अ बंगाली, यू नो कि डिटेक्टिव मूवीज जब हम सोचते हैं तो वी हैव सम वेरी बिग रेफरेंसेस लाइक फेलुदा. आई मीन मिस्टर सौमित्र चैटर्जी इज द legendary actor and the famous actor of Satyajit Ray. Satyajit Ray created one of the biggest detective in the Indian cinema named Feluda. We all know him. तो बचपन से मैंने उनको देखा था एज ए फेलुदा, एंड मेरे ध्यान में डिटेक्टिव अगर मैं सोचना था तो उसी नाम बार बार आ रहा था. एंड व्हेन आई एम राइटिंग द स्टोरी, तो मुझे ऐसा लगा था कि ही विल बी द परफेक्ट चॉइस फॉर माय फिल्म, बिकॉज आई वांट टू शो older Feluda, like मेरे कैरेक्टर पे वो चाहिए था. So I straight after writing the script, I straight go to Mr. Saumitra Chatterjee. Unfortunately, he's no more with us, and it is a big loss of Indian and world cinema. And I went to Saumitra Chatterjee and I give him the synopsis of my story, and I said that अगर आप ये कर रहे हो तो हम ये फिल्म बना रहे थे, नहीं करना है मुझे फिल्म. तो I can remember he laughed a lot, and then he said ठीक है, आप स्टोरी को छोड़ के जाओ मेरे पास, मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, and then I will confirm, because you know he's a very choosy person. Of course. Why not? इतना बड़ा लाइनेज है उनका. So after a week I got his call, and he said me, Shantanu, ठीक है, ये तो मुझे अच्छा लगा, एंड आई लव टू डू दैट. तो शूटिंग पे कब जा रहा है, तो इट वाज लाइक अ चलो, मुझे तो बहुत कुछ मिल गया था उसी पल पे. तो देन नेक्स्ट मेरा प्रोडक्शन टीम विद प्रोड्यूसर वी हैव सीटेड, एंड देन द अदर कास्ट हैज बीन फाइनलाइज्ड. तो वो भी काफी लेजेंडरी एक्टर्स थे, लाइक शोभूसाई चक्रवर्ती इज आल्सो वेरी फेमस इन पैन इंडिया मूवीज, आल्सो इन हिंदी सिनेमा. Shubhasai Chakraborty played lots of roles. So Benuda come to our board, and he also liked the concept of the movie. Over the phone we have discussed, and then he asked for his narration and the script. तो मैंने गया उनके पास, उनको स्क्रिप्ट सुना, तो उनको भी बहुत पसंद आया concept, and he said okay fine, I am doing that. So I think from the I believe in that sense that when I am writing a story or writing a script, वो स्क्रिप्ट मुझे बताता चला जाता है कि मुझे किसको लेना है.
एक इमेज, आई थिंक मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर जो अपना स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, तो ये शायद ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ही ऐसा ही होता है कि आप जब लिखते हो तो तभी आपके दिमाग में कुछ चेहरे आ जाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत फॉर्चुनेट होता है एक फिल्म मेकर के लिए, अगर पहले जो नाम आपके ध्यान में आया है अगर वो आपको मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं मिलता तो देन यू स्टार्टिंग टू कॉम्प्रोमाइज थिंग्स। कभी कभी वो वर्क भी करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एज वी ऑल नो कि मुन्ना भाई एमबीबीएस के पहला चॉइस शायद शादी, एब्सोल्युटली, बाद में वो संजय दत्त का ऑफर हुआ, ऐसे बहुत सारे केसेस भी है। तो कभी कभी वो वर्कआउट हो जाते हैं, बट फॉर ए फिल्म मेकर इट विल बी डेफिनेटली ट्रिगर पॉइंट जहां पे आप जिसको चाह रहे थे, आपका स्क्रिप्ट जिसको चाह रहे थे, जिसको सोच के अपनी स्क्रिप्ट बनाया है, अगर वो आपके हाथ में आ जाए तो माशाल्लाह क्या कहना। क्या बात है। आई थिंक ये मेरे साथ मेरे फर्स्ट फिल्म पे हुआ था एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ फॉर दैट। Awesome. Thank you for sharing. Thank you, and it is obviously a great victory कि पहली फिल्म में आपको वो मिल जाए और वो मिल जाए जो किसी को नहीं मिलते, तो फिर क्या बात है। बट टू ब्रिंग इन द कॉन्टेक्स्ट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बट आई थिंक हम यहाँ पे जो लार्जली सबके बेनिफिट की बात कर रहे हैं और जो क्लियर हो रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट राइटिंग के टाइम पे, आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग के स्टेज पे आपको आपका कैरेक्टर दिखने लग जाता है, राइट। अब वो कैरेक्टर आपका एक नोन कैरेक्टर ही होगा तभी आपको कोई नाम आ रहा है, वो आपके जानने पहचानने में कोई होगा या कोई बहुत ही बड़ा स्टार कास्ट होगा, राइट। अगर आपको आइडियली अगर आपको वो फिल्म में मिल जाते हैं तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज वो नोन है, आप उनको जानते हैं, एंड दैट वाज योर फर्स्ट चॉइस, यू नो, सो दैट इज ऑब्वियसली द बेस्ट। बट लाइक आशुतोष ऑल्सो सेड दैट द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि अगर वो नहीं हो पाता किसी वजह से, देन यू लुक फॉर somebody like him or her, right? अब ये somebody you think like him or her can be very subjective, right? इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा नेक्स्ट बेस्ट सेलिब्रिटी कौन है, you know, तो जो शाहरुख खान करता है वो शाहरुख खान ना करे तो कौन कर सकता है, that's one second guess, right? बट उससे थोड़ा सा अगर जूम आउट करें तो देन बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज कि किसके हैं जिसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स मैच करते हैं, कौन है जिसका डायलॉग डिलीवरी सिमिलर हो सकता है एज दैट, किसका अगर कॉमिक है तो किसकी कॉमिक टाइमिंग कैन बी क्लियर इनफ, राइट। और ये पूरे प्रोसेस के लिए एक ऑडिशन का एक तरीका होता है, स्पेशली फॉर एक्टर्स, एटलीस्ट देयर इज एन ऑडिशन प्रोसेस, राइट। सो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट for the filmmaking process, auditioning is a very, very important process, right? And of course, we are not talking about only the main lead. खाली एक ही lead तो पूरी film चलाते नहीं हैं. There are all actors who are also a part of the ensemble are as critical as the main one. वरना जरूरत ही क्यों थी उनकी, right? So everybody being important makes the film. फिल्म का लुक जो होता है वो पूरा सबके बनाने से डिफाइन होता है, विच इज देन इट गोज टू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द प्रोड्यूसर पुट्स अ वैल्यू टू इट. दैट इज व्हाट रितेश एंड मिस्टर स्वामी हैज बीन टॉकिंग अबाउट, पुटिंग अ वैल्यू टू इट, राइट. एंड व्हेन दे पुट अ वैल्यू टू इट, देन दैट वैल्यू टेक्स इट फॉर अ थिएट्रिकल रिलीज और एन OTT और अ वेब, राइट. सो आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कितना इंटीमेट प्रोसेस है. इट इज वेरी वेरी interrelated from the last step to the first step to the last step, right? और ये पूरे process में आप involved हैं. So यहाँ पे ये जो artist behind every content, being the creator, being the artist who's actually the sole driving person of that space, is a huge ocean to dive from. Getting your dream artist, awesome. If not possible, then what? So this is exactly where Match My Talent stands. मेरा जो इतने सालों का कमिटमेंट था वो यही था कि जो एक एक्टर है, एक आर्टिस्ट है, वो नए फिल्म मेकर्स तक, नए से मतलब ये नहीं कि जस्ट नया, बट somebody जिनको वो पहले से नहीं जानते हो, उनको वो कैसे उनके पास विजिबल हो, और हम सब लोग जो फिल्म मेकर्स हैं उनको कैसे अपनी स्टोरी के हिसाब से वी फाइंड द राइट एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, द राइट. Again, the word right is the big thing here. Right क्या है वो फिल्म मेकर को ही पता है, लेकिन चाहे वो ऑडिशन के प्रोसेस के थ्रू पता हो, चाहे कैसे भी पता हो. सो दिस इज व्हाट, जस्ट फॉर आप लोगों की नॉलेज के लिए, मैच माय टैलेंट के साथ में इस वक्त अबाउट 45,000 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, जो कि इंडिया के सारे पार्ट से हैं. यानी कि आप जहां से हैं उस जगह पे भी मोस्ट लाइकली बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे,
और जरूरी नहीं कि आपकी पूरी फिल्म एक ही स्टेट में, एक ही सिटी में बने. सो देन the rest of the India is also a part of it. So this community is available on Match My Talent, and आप सारे filmmakers इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं. और इसको एक्सेस करने के लिए बहुत ही सिंपल एक सर्च इंजन है. आप जैसे matchmytalent.com टाइप करेंगे, वहां पे एक सर्च इंजन सामने आता है, and you can type something like looking for 24 to 34-year-old male actors, athletic body. You know, if that is your first reference, right? You can go in as much detail, your hair color, skin color, type of voice, native look. I think native look बहुत important होता है हमारी स्टोरी के लिए, कि उसकी एक्सेंट कैसे होगा उस आर्टिस्ट का, उसका लुक कैसे होगा. You can type all of that in that, and it will lead you to exactly the artist, and then you can contact them directly through the website. अब उसके बाद आप लोग की इनिशियल कॉन्टैक्ट के टाइम पे अगर आप लोग एक दूसरे को डायरेक्ट नंबर्स एक्सचेंज करना चाहते हैं, we have no problem in that. But we only put a firewall till step 1, क्योंकि artist का privacy is also important for us. So if the artist is happy to give you the direct number and vice versa, there you go, and then it's a direct connectivity. So just for today, for the forum, we have like a complete 50% off on all the membership. Anyways, the membership बहुत ही reasonable है. It is like 4,000 rupees, 7,000 rupees, and 13,000 rupees for the entire year, with unlimited amount of artists that you can contact through the different packages. ये सारी information obviously Match My Talent पे है, but there is we are very happy to give you like a 50% complete off for today. And the code for that will be given by my team here any moment now on the chat. So that's available. So anybody who would like to go for it, just go for it now. Also, while we are chatting, our next session of the Foreground Forum will be on 8th March on script writing. So we will have a couple of script writers who will come and lead the discussion of how to best work on your script and screenwriting. So stay tuned for that and join us on that. So now back to our interaction. Ritesh, I know your camera is switched off, but that's completely okay. We will continue with our question. So Ritesh, the question for you was, what sells today? There is no fixed thing like that. What sells today? Everything, whatever genre you feel like that you can make it perfectly with proper grammar, as I told you, with proper technical and sound technical way, your product is going to be sold. Okay. So if everything sells, which of course I agree, because देखने वाले इतना कुछ देख रहे हैं. We all as audience want to watch. हमें biographies भी देखनी है, हमें thriller भी देखना है, हमें documentaries भी देखनी है, docu-fiction भी देखना है, fiction भी देखना है, सब कुछ देखना है हमें. So that's true. I totally agree with you, Ritesh. But जब filmmaker ने अपना content बनाया, क्या distributors segmentation करते हैं producer and distributors की हम इस तरह के genres में better interested हैं या नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता है. देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले देखते हैं स्टार्स, कास्टिंग. स्टार मतलब आप स्टार का मतलब हमेशा वो टॉप 5 टॉप 10 मत सोचें. राइट. सबका एक सेगमेंट होता है, सबको मालूम है. वो 100 करोड़ के ऊपर वाले, 50 करोड़, 20 करोड़ या 10 करोड़ या 5 करोड़. तो एक जिस ब्रैकेट में आपने फिल्म बनाई है, उस ब्रैकेट में कौन सा स्टार का फिट होता है, उसके हिसाब से आपको बनानी होती है. वो देखते हैं ये स्टार कास्ट पे अच्छा, चलो इतने आ सकता है, तो वो रिलीज कर देते हैं. अच्छा, दूसरी चीज ये भी होती है कि डिस्ट्रीब्यूटर जब हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू एग्जीबिटर के पास जब जाते हैं, तो कई सिनेमा हॉल वाले रेंट पे भी लेते हैं. वो अपना सिनेमा हॉल, अपने स्क्रीन आपको रेंट पे दे देते हैं, इफ यू कैन अफोर्ड दैट. कि वहां पे फिर आपको, हाँ, तो वहां आपको कोई 50%, 45% या 55% नहीं देना होता है. तो आपने कर दिया 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वट जो अलग एरिया टू एरिया डिफर करता है हिसाब से, तो वो भी सारी कमाई वहाँ की आपकी होती है. जस्ट वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, सपोज कीजिए अगर वहाँ पे फिल्म ने उस पर्टिकुलर सिनेमा हॉल में फॉर एग्जांपल 10 लाख का बिजनेस किया है, राइट, तो वो 10 लाख में डिस्ट्रीब्यूटर अपना शेयर काट के सपोज करिए 10% ले रहा फॉर एग्जाम्पल, तो 9 लाख आपको दे देगा. वो पूरी आपकी कमाई है. ये मुझे नहीं पता था. थैंक यू वेरी मच. So that's also an option, guys, कि आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर को 50% एंड ऑल ऑफ दैट की बात नहीं है. अगर आप कुछ सिनेमा ओनर्स को जानते हैं और यू कैन बिल्ड अ नेटवर्क. नहीं, आप पहले फिर गलत समझ रहे हैं.
Okay. और आपको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। I see. Okay. सिनेमा हॉल वालों को आप बोल सकते हैं कि भाई मैं रेंट पे लगाना चाहता हूँ। Okay. पठान मैक्सिमम सिनेमा हॉल्स में रेंट पे ही लगी है, तभी उनकी सारी कमाई जितनी भी हो रही है वो पूरी उनकी होती है। They themselves are distributors also. Oh, so you go through the distributor, but आप फिर exhibitor के साथ में you're not doing a profit sharing or a revenue sharing. You are doing a rental agreement. Either you go for revenue sharing or you go for the rental basis. Correct. So rental में obviously आपका risk है कि अगर फिल्म ने उतना नहीं भी बनाया तो भी rent तो pay करना ही है. Rent तो pay करना ही पड़ेगा, वो advance में pay करना होता है. Right. Right. So yeah, so it is about जो आपका distributor है और आपके producer है, उनका क्या conviction है उस फिल्म के। अगर आपको लगता है कि अच्छे से पैसे बनेंगे और rental is affordable, आप rent afford कर सकते हो, then this is a very, very good strategy. Yes. Okay. So then Ritesh, एक filmmaker, एक producer, audience कैसे लाए अपनी film के लिए? What has been your strategy so far? Promotion. I mean, first of all, you have to make a good content. Right. Good actors. Right. Very big actors, but okay, some semi-known. And some you can take freshers also who are very good in acting. Right. To go for the promotion, because unless people will know that such film is coming, yeah, will they come and watch? So you have to do marketing, and today there is a cheap way of marketing. You can say it is digital marketing. Right. That expensive as compared to like electronic media or satellite marketing and all such kind of like on the channels and all. You don't have to spend crores. You can spend few lakhs and you can aware of the whole area of public that okay, this movie is coming. If your content is good, your trailer is good, they will definitely like it. They will definitely come to watch the movie. So I think this is filmmakers. Yeah. Yes. I mean, suppose there is Chhattisgarhi films, Bhojpuri films, Bengali films. I mean, they are getting released in a particular region only. So it is easier, more cheaper to do the digital marketing in a particular area, because you are going to because you are having a selected number of theaters only. You're not releasing pan India in thousands of theaters. You are releasing in 50 theaters, 100 or 200 theaters. So you know the area of marketing. I mean, you can hit the market in that particular area only. Right. The film is getting released in Bengal, you don't need to advertise it in Bihar. No? Yeah, absolutely. Yeah. So focus all your budgets in that area. Yeah, that is also much easier way. Perfect. So obviously, make just as a recap, guys, before we open it for networking directly right here on the screen, which is the next thing that we're doing. But a quick recap. Content ideal is for the masses. Masses के लिए content बनाइए, उसको test करिए before you take it to any distributor, producer, and putting all your roses in one basket. Test it by your neighbors, your family, your colleagues. Everybody who hates you, you should definitely take a feedback from them, because most often वो आपको सच्ची बताएंगे because they hate you, so definitely take it to your fans and the people who are not your fans, but be open about it. That's taking on the feedback. Then definitely get to distributors. Getting to distributors, हम बार-बार बात कर रहे हैं. Yes, it's a black hole. We don't know where are the distributors, how to access them. उसी के लिए ये सारे platforms हैं where getting to know more and more is going to be made easier. And today itself, you've gotten to know 2 of the people. So please leverage this and their network and our network as much as you can. So that's about taking it to the right distributor. Like Ritesh said, that understand your film and its audience. उस ऑडियंस के हिसाब से वहां के थिएटर्स ढूंढिए, वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढिए. दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग. अगर वहां पे आपने अच्छे से पब्लिसिटी कर ली एंड योर फिल्म इज प्लेइंग, देन योर strength to put it in the OTT becomes much more, because people will want that content. Sorry? There's one more thing. You don't really need to go for masses each and every time. Suppose if you're having something other in the mind, like you want to make some conceptual cinema, I mean, you do have audience for that also. You have to understand that. I mean, you need a good digital marketing person. Yet you know that what kind of audience, where you can get such kind of audience. And film festivals are
a place for conceptual cinema. Right. You are interested in film for masses, like a commercial film, go for that. Otherwise, if you want to make some art cinema or some conceptual cinema, you can go for that as well. You do have a market for each and every kind of film. Should not be, I mean, you should be technically sound, I told you now. Right. Technically sound, you have market for any kind of concept. Right. So again, I mean, agreed that one is the masses approach, the other is your conceptual experimental thing. There is an audience, of course, but like, you know, like जैसे अभी आपने ट्रेलर नहीं देखा था रितेश, but नागेश जी ने जो ट्रेलर शेयर किया था, kindly send it me on mail. I will watch Absolutely. it. Absolutely. And there are many other trailers which our team has shortlisted right now. So in the interest of time, agar hum abhi nahi bhi dikha paye, all of them will be shared with you and all our distribution network. Absolutely. Or kisi bhi distributor se interest aata hai, we will reach out to you and we'll make sure that your communication happens with the distributor. That's a promise. So that's absolutely there. So make it for the masses, make it experimental, whichever you want, and then find the right distributors. All right. So now we can just move to our networking session. I will just read out the questions जो कि already Ritesh आपके लिए और Mr. Swami के लिए हमारे filmmakers ने भेजे हुए थे. उसके बाद अगर कोई questions रहते हैं, please raise your hands and you can directly come onto the screen. Okay. So Sumit, your question was, what are the basic things a filmmaker should keep in mind before taking a film to the distributor? So you said example, known phase, video quality. I think that's already covered. Definitely a known phase doesn't mean the top 10, but somebody whose value can be estimated by the experts. And there is a body of work behind them. And then it's the technique and the grammar of the cinema. That is what you should keep in mind. There's no formula to it, but do the best you can. Mr. Verma had asked, if we have tie-ups in advance with distributors and distribution company, is there any possibility of getting some percentage of money in advance from distributor? Ritesh, can you help that? That was in the older days, it do happen, but now the concept has changed totally. You won't get any money from the distributors in advance to make the money. I mean, in 60s, 70s, and even in 80s, at the time of Dharampaji, Mithunda and all, it does happen. It did happen. Right. Well, I mean, you just have to sign Mithun Chakravarti or Dharminder or Jitendra. The rest of the money this distributor used to pay them to make them. The whole concept has been changed nowadays. So you won't get. बहुत पुरानी बात हो गई फिर तो छोड़ देते हैं. Distributor is a very good friend of yours or a good relative of yours. You won't get even a single penny from them. They might invest the money in the release of the film, but they won't give you money to produce the film. For that, you need financiers or investors. Okay, so that's great enough. They might invest the money in the release of the film. That's a possibility. Yeah. Nowadays also, I mean, like Swamiji, my partner, he's already doing that. No? We do invest in the movies. I mean, once they have been completed, we are releasing so many movies. Great news, guys. Great network. We invest in that. I mean, if we like the concept, if we think that, okay, this movie can do well, we definitely invest in P&A. Perfect. Do you also do biographies? Anything. I told you that the concept is, I mean, if a concept is written properly and the person, director, if I am convinced that the director is going to make the movie properly, I will definitely do. We are doing, we are in fact planning a biography also. I won't tell you the name now because once that thing is completed, I will let you know. Yeah, the secret. No, we will not ask you the secret. So Shemaj, that's a good news for you. Shemaj is working on a biography that I'll discuss it with you, Ritesh, as soon as that's ready. Definitely you can discuss it. Absolutely. So Devan's question is, do you provide services in Bengal? Yes, of course. I mean, it's everywhere. It's India, regional, international, everywhere. जब genre ही फर्क नहीं है तो location से क्या problem होता है? Just make a good film and reach out. Shemaj, I think your topic for looking for okay. So Shemaj, who was making a biography in Kerala of a renowned person, had asked that he's looking for distribution and production support. So distribution is clear. Shemaj, you will be connected to them and they'll review the film.
what production support are you looking at? Please message, and Ritesh can understand that, but he's an expert at the production support. Okay. Okay. So does the length of the film matter, Ritesh, for your company? Here also so many people ask me that, I mean, we should make a movie which should be only 1.5 hour or 2 hour. I always tell them that, name me one film which was 3 hour or more than 3 hour of length and it has been flopped. Name me just one film. Can you? It all depends that whether your content is letting the audience to sit or not. The content is good and it is lengthy, people will watch. It should not look boring, na? Yeah. So content. So RRR released, it was 3 hour and 5 minutes long. Yeah. नहीं, but short film में आप as an AS Pictures आप short films पे भी करते हो distribution? Short films distribution होता है हमेशा, एक चीज को समझिए, सिनेमा हॉल्स के लिए. Right. Which is long format. सिनेमा हॉल्स के लिए होता है. सिनेमा हॉल्स में फुल लेंथ फिल्में लगती हैं. शॉर्ट फिल्में कभी आपने देखा नहीं लगेंगी. बट हाँ, शॉर्ट फिल्मों के लिए हम OTT में हेल्प करते हैं. राइट. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बनाई है, किसी ने 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 27 मिनट्स ऐसे बनाई है. राइट. वहाँ उनको मैं प्लेटफॉर्म दिलवाता हूँ OTT. राइट. वहाँ कुछ फिल्में बिक जाती हैं, कुछ फिल्में बिकती नहीं, कमीशन बेसिस पे आती है. मैं बोलता हूँ कि वो भी कर लेना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आपकी मूवी उतने प्लेटफॉर्म्स में देख तो रही है. विजिबिलिटी तो हो रही है एटलीस्ट. कि हाँ, आपने एक मूवी बनाई है, दिस इज हाउ यू कैन मेक ए मूवी. पीपल कैन सी योर रिजल्ट ना. वो उससे भी घबराना नहीं चाहिए. ठीक है, आपको फायदा हो ना हो, हर काम फायदे के लिए नहीं किया जाता. इंडस्ट्री में सबसे पहले आपका नाम बनता है, गुडविल बनती है, क्योंकि ही इज अ गुड फिल्म मेकर, ही इज अ गुड एक्टर, ही इज अ गुड डायरेक्टर, अ गुड एडिटर, अ गुड DOP, व्हाटएवर. राइट. ही इज अ गुड फिल्म मेकर इन शॉर्ट. राइट. तब आपका काम आगे बढ़ता है, आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं. Absolutely. It is, even if it's a short film, बनाने वाले को भी तो देख रहे हैं ना, जितने लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं वो आपको देख रहे हैं. सो शॉर्ट फिल्म को जहां पे ले जा सकेंगे, टू एन OTT, टू अ वेब प्लेटफॉर्म, टू अ फेस्टिवल, जहां पे भी कर सकेंगे वो डेफिनेटली पिक्चर करेंगे. वो भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है ना. डिस्ट्रीब्यूशन पहले मतलब होता था सिर्फ फिल्मों का, मैंने जो सिनेमा हॉल्स में. आज भी डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए ना. आप कैसे जाओगे डायरेक्टली OTT में? आपको तो पता भी नहीं है ना एड्रेस क्या है, और आप एड्रेस लेके वहां पहुंच जाओगे तो एंटरटेन करेंगे नहीं. राइट. वो उसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर्स ही होते हैं. तो वो ये चीज करते हैं. जैसे साउथ की मूवीज यहाँ पे हिंदी में डब होती है, यहाँ की मूवी साउथ की लैंग्वेज में डब होती है. इवन सीरियल्स, आपका वो क्या था, वो सीरियल नजर, वो वहां पे भी आता है साउथ की लैंग्वेज में. तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स ही करते हैं ना, अलग अलग लैंग्वेज में. आई थिंक कई लोगों का क्वेश्चन था कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे वर्क करता है, मशीनरी कैसे वर्क करती है. सो ये जो बता रहे हैं, ये दिस इज ऑल दैट पार्ट. फर्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम कि आप अपना कंटेंट दिखाइए डिस्ट्रीब्यूटर को, और फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि इसका एक्चुअल मार्केट कहाँ पे हो सकता है, और उसको किस तरह के, आइडियली ऑब्वियसली एक थिएट्रिकल हो गया, थिएट्रिकल में होगा तो किस तरह के थिएटर्स में वो आपको आपकी फिल्म ले जा सकते हैं, वो आपसे डिस्कस कर लेंगे. अगर थिएटर नहीं है, डिजिटल है, डिजिटल में क्या हो सकता है, दैट विल बी टोल्ड. फिर जहां तक राइट्स की बात हुई, वो भी कवर हुआ कि डिजिटल में मोस्टली सारे राइट्स जो होते हैं वो डिजिटल नेटवर्क के होते हैं. थिएट्रिकल में थिएट्रिकल के राइट्स की बात हुई. सो दैट इज द पॉइंट जहां पे जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपके फ्रेंड हैं, वो आपके इंटरेस्ट की बात आपको बता पाएंगे कि ये यहाँ पे जा रहा है. सो दीज आर योर राइट्स, दिस इज द काइंड ऑफ rights you control. Do you want to give it? Do you not want to give it? And of course it's a good practice कि आपका एक लॉयर हो, आपका एक ट्रस्टेड लॉयर हो जिसको आप ट्रस्ट कर सकें. लॉयर के भरोसे मैं नहीं कहूंगा कि इस लाइन में आप जाइए दादा, क्योंकि लॉयर दूसरे तरीके से बात करते हैं, वो अपनी जगह सही होते हैं. हाँ. आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि जो भी बड़े प्लेयर्स हैं वो आपकी फिल्म तभी लेंगे जब वो आपसे सारे राइट ले रहे, क्योंकि उन्हें आपसे कमाना है. अदरवाइज व्हाई वुड दे पे यू? इफ आई एम पेइंग यू 10 लाख और 1 crore, whatever the suppose XYZ amount, so I'm earning, why would I buy it? Right. लीगल ही होता, हम भी बेचते हैं ना. मैं भी बेचना पड़ता. यू हैव टू सेल द राइट्स. हाँ, वो ठीक है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या फिर 25 years के लिए होता है, वो अलग अलग है. राइट. तो कंसर्न पर्सन चाहिए. लॉयर तो सिर्फ उसमें लिख के दे सकते हैं आपको.
ना वो इतना ज्यादा वो आपके लिए टफ लॉ बना देंगे, आप कभी को डील कर ही नहीं पाओगे। They'll make it tougher. Right. फिल्म लॉयर ही हो उनके पास ही जाए, क्योंकि बाकी लॉयर समझ भी नहीं पाते हैं इस चीज को। हाँ वही, नहीं फिल्म वाले लॉयर्स, ऑब्वियसली नॉट जनरल लॉयर्स, वो तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। बिल्कुल। Sure. So question from Nitin Sampson is, I have a complete Tamil feature film. How do I sell it outright? आउटराइट जरूरी नहीं बिके या ना बिके, बट आप ये है कि डेफिनेटली उसके ट्रेलर भेज सकते हैं। अगर हमें वो पसंद आती तो हम उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं रिलीज करने में। और अगर ज्यादा पसंद आई, इफ वी थिंक दैट कि ठीक है हम इसको डब करके पैसे अर्न कर सकते, ओनली तभी वो हो सकता है, वरना आउटराइट हर फिल्म नहीं जाती। Got it. How to self-release a film? सेल्फ रिलीज का तो मतलब ही वही है कि या तो फिर अगर आप खुद ही रिलीज भी करना चाह रहे हैं तो पहले अपना खुद का एग्जीबिटर्स का एक नेटवर्क बनाइए, खुद आप डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बनाइए, अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनिए और फिर खुद रिलीज कीजिए। बट आई वुड नेवर सजेस्ट दैट, क्योंकि एज एन एक्टर मैंने बहुत साल पहले एक फिल्म की थी, हमारे प्रोड्यूसर ने वही गलती की थी। उन्होंने लगा कि मैं उसमें ज्यादा कमाऊंगा, कुछ नहीं, क्योंकि जब आपको कोई जानता नहीं तो कोई आपके सिनेमा हॉल आपको क्यों देगा? डिस्ट्रीब्यूटर्स ही तो जानते हैं ना। वो एक सिस्टम बना हुआ है, डोंट ट्राई टू फाइट दैट सिस्टम अननेसेसरीली, फाइट विद दैट सिस्टम। वो एक बना हुआ है। आप नॉर्मली जो प्रोडक्ट मार्केट में आता है सामान बेचने के लिए, जैसे जो भी क्या बोलते हैं FMCG गुड्स भी जो आते हैं, उसके लिए भी डीलर्स होते हैं ना, C&FA होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, उन्हीं के थ्रू आता है ना, डायरेक्टली तो मार्केट में दुकानों में नहीं आता। सिस्टम बना हुआ, एक चैनल बना हुआ है, वो चैनल से ही जाना चाहिए। कुछ लोग वो जबरदस्ती, पता है ना, हर जगह यहाँ से भी पैसे बचा लो, वहां से भी बचा लो, उनको मिलता कुछ नहीं है। या तो पैसे बचाने वाला कॉन्सेप्ट होता है, या होता है कि कहीं से कुछ नहीं आ रहा, कहीं से कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो लगता है चलो खुद ही कर लो। तो मैंने बोला ना, मूवी बनाने से पहले आप सोच लीजिए आप बना क्यों रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है। जब तक आपके अगर आप कॉन्सेप्चुअल सिनेमा बना रहे हैं तो उसका मार्केट अलग जगह है, अगर आप कमर्शियल सिनेमा बना रहे हैं तो उसका मार्केट ये सिनेमा हॉल्स है। फेयर पॉइंट। सो फर्स्ट लाइक सीधा कोई स्टोरी समझ में आ गई, उसको बनाने पे जाने के कर लो, बट उसके साथ में प्रोसेस ये भी है कि जब खत्म हो जाएगी तब कहाँ पे जाना है, वेयर इज दिस गोइंग टू बी, और वो नेटवर्क बिल्ड करते रहो। जब भी आप एक कमर्शियल मूवी बना रहे हैं तो सिनेमा हॉल्स में रिलीज करना है, वो मूवी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी चाहिए, उनसे डिस्कस की, वो सीधी बात है, हर किसी को पैसे कमाने हैं। आप उनके लिए क्या बेनिफिट दे सकते हो, आपकी मूवी को क्या या तो आप उतने जितने जगह में, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे 2000 स्क्रीन चाहिए पैन इंडिया में, क्या आप उतना पैसा अफोर्ड कर सकते हो? कर सकते हो। सामने वाला तभी लगाएगा, अगर आप चाहते हो कि वो लगाए तो वो तभी लगाएगा जब उसको दिखेगा कि 2000 स्क्रीन के लायक जो पैसा जो खर्च होना है PNA में, उतना मेरा रिकवर हो रहा है या नहीं। अब 2 करोड़ की मूवी 2000 स्क्रीन में तो लगने वाली नहीं है, 10 करोड़ के ऊपर जाना है 2000 स्क्रीन के लिए, वो तो लगेगा नहीं। तो आपको पहले ये देखना है ना कि कितने स्क्रीन में क्या क्या हो सकता है। ये कुछ चीजें ऐसी होती है धीरे धीरे करके आती है। सो ऑब्वियसली जो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी रिलेशनशिप भी है, वो पहली बार एक बार में नहीं होगी, बट उसके बाद में यू हैव टू ग्रेजुअली डेवलप दैट रिलेशनशिप आल्सो। जरूरी नहीं कि पहली वाली फिल्म और पहली वाली रिलेशनशिप में हर चीज आपके हिसाब से हो जाए, बट इट्स एन ऑनगोइंग रिलेशनशिप। जब डिस्ट्रीब्यूटर भी आपका स्टाइल समझ जाते हैं, दे आर ऑल्सो एबल टू पिच यू बेटर। जी बिल्कुल। कोई भी मूवी बनाने से पहले आप सबसे पहले देख ले, अगर आप मास के लिए बना रहे हैं तो क्या वो मास को एंटरटेन करने वाली है फिल्म, आप खुद से पूछ लो। अगर वो एंटरटेन नहीं करी तो क्यों जबरदस्ती दिखा रहे हो? आप जाते हो कोई फिल्म जबरदस्ती देखने? नहीं जाते हो। तो आपका टेस्ट है, और याद रखिए हर जॉनर के लिए ऑडियंस है। ये मत सोचिए कि नहीं सिर्फ कॉमेडी चलेगी या सिर्फ एक्शन चलेगी, हर जॉनर के लिए है। बट आप भी क्या उतनी इंटरेस्टिंग बना पा रहे हो जो पब्लिक को 1.5, 2, 2.5 घंटे बांध के रख सके। राइट, उस हिसाब से। परफेक्ट। So I think I would like to involve all of you in asking your questions now. जो first part के questions थे, I've read it. अभी जिसके भी questions नहीं answer हुए, and if you have a question, please raise your hand and we can talk directly with Mr. Ritesh now. Yeah, Suhas, please go ahead. So yes, Omkar. Yeah, sir, we'd like to ask how much do you prefer pre-sales of a script? Like if we bring a script to the distributor, how often would they select it? Like they'll promise us कि we'll buy it, you make a movie first.
There is no guarantee for a distributor to buy the script. First of all, if you want to sell your script, go for a producer, not for a distributor. You can just have an idea that such kind of subject is going to work or not. But you cannot ask any guarantee. I mean, even if he gives you a guarantee, and after that, and once you make the movie, and technically it's not sound, it's not been made well, so he won't buy it. Any distributor will buy the film or release the film only after seeing your final output. So always go for a producer first. I mean, what kind of, if you want to ask any distributor for the script, just ask him and just make, you can do some necessary changes, but don't expect any guarantee from them. Okay. Sir, what is the best way to approach a producer, sir? Like we as filmmakers, we don't know where producer lives, where his office is. So how can we best approach a producer or too many producers for our film? Sonia ji's platform is good for that. You can approach her, she will approach to us. And if we like the concept, we will definitely produce. We are producing so many projects, you can say, some movies and some web series as well. If I do like your project, and even we do look for the good subjects also. Even like I have been seeing that there is a kind of saturation in this market, like everybody is bringing some old kind of stories only. If you have some good concept, I will definitely entertain it if I like it. So absolutely perfect question, guys. We totally realize कि ये बहुत बड़ा गैप है. बिल्कुल सही बात है कि आप फिल्म मेकर हो, आप स्टोरी बना सकते हो, but producers, distributors कहाँ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, it's a mystery, right? Which is why, like I'm saying, we all have to come together. अगर आपको कोई पता है तो आप कम्युनिटी में शेयर करो. हम ये सिस्टम बना ही रहे हैं. So मल्हार फिल्म फेस्टिवल जो है वो एक ऐसा ही सिस्टम है. So इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस थे कि how do we do this, how do we reach out, how do we are there, Suhas said, yeah, you had also only asked that how do we pitch to many distributors and producer easily accessible platforms. इसका कोई बहुत direct answer नहीं है, but we are definitely trying to be one such channel and trying to be of use. So definitely reach out to us. हम जो कर सकते होंगे, we will definitely, and then जो हमारा network है, which is many other distributors in India and international, they're very, very nice people. We are only able to collaborate with nice people, because, that is why they all come together. Then they are able to also connect us with further more people. If it doesn't interest to them and they can recommend it to other people, they have been doing that, So that's what is for now. Vijay, I think, sorry. One more thing I had to tell you. Yeah. That we as filmmakers, what we did was, we had a full screenplay, storyboard, everything ready. What we did is we went to Netflix's office to show them कि ये देखो हमारे पास ये सब है, हमको हमारे लिए produce करो और distribute भी आप ही करो. So what happened there was they didn't let us in the office. First thing was because they were asking कि you need a distributor first who's going to be there, and हमारे साथ Netflix के distributors होंगे तभी हम लोग आपको अंदर आने देंगे, तभी वो लोग उनसे बात होगी, डायरेक्ट आपसे तो बात नहीं हो सकती हमारी. तो वो एक चीज थी जो मतलब मेरे को शेयर करना था. तो मैं पूछना चाहता था कि सर, ये जो आपका कंपनी है, इसमें आप जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, क्या ये नेटफ्लिक्स तक पहुंचने का ये रखता है और प्राइम ये सब? बिल्कुल. हम ये जो टॉप 10 जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्हीं में से 1-2 के लिए वेब सीरीज करें. मैं अभी फिलहाल तो नाम नहीं लूंगा, आफ्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बताऊंगा. हम ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ हम शूट पे भी जा ही रहे हैं, तो उसी के भी आजकल तैयारियां चले. एक्चुअली स्वामी जी भी आज जो बिजी थे वो इसीलिए थे, हम लोग ज्यादा बिजी इसलिए हो रहे क्योंकि हमारा नेक्स्ट मंथ शूट होना है, तो उस पर थोड़ा तैयारियां ज्यादा चल रही हैं, तो मीटिंग्स भी काफी सारी हो रही हैं. तो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये जो है ये देखिए मैंने बोला ना, आप ही के पास कोई राह चलता अचानक से आ जाएगा, आप एंटरटेन करोगे क्या जब तक आप किसी को जानते नहीं हो या किसी के थ्रू नहीं जानते हो. आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं सड़क पे चाय पी रहे हो या सिगरेट पी रहे हो या कहीं पे बैठे हो कि रेस्टोरेंट में, अचानक कोई बंदा आएगा आपके पास, बोलेगा मुझे काम चाहिए, आपको भी डर लगेगा ना कि यार ये वाकई में एक्टर ही है या पता चला कि मुझे लूटने आया है. अननोन पर्सन के पास क्यों जाएगा, क्यों एंटरटेन करेगा अननोन पर्सन को. हम उनके साथ काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमको जानते हैं कि हाँ हम फलाना फिल्म बना चुके हैं, फलाना वेब सीरीज बना चुके हैं या फलाना फिल्मों को हम रिलीज कर चुके हैं. तो वी हैव, ये नाम बनाने में मुझे एक समय लगा, राइट.
किसी के भी पास किसी को भी सोचना चाहिए कि कोई किसी को क्यों एंटरटेन करेगा। आपकी कोई तो एक आइडेंटिटी होनी चाहिए ना सामने वाले के सामने, तो आपको वो And that is the power of community, guys. We all have to understand. आज मैडम की जो कम्युनिटी है, आज हम यहाँ पर आए, आपसे मेरी बातचीत हुई, अब मुझे ध्यान रहेगा ना कि हाँ एक सुहास एक फिल्म मेकर हैं जो कुछ नई स्क्रिप्ट लेके रखते हैं, जिन्होंने नेटफ्लिक्स में भी ट्राई किया था। मैं उनकी स्क्रिप्ट डेफिनेटली एक बार पढ़ूंगा, पहले सिनॉप्सिस पढ़ूंगा, अच्छी लगे फिर स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, अगर अच्छा लगा डेफिनेटली मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा। देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द मनी पार्ट, फाइनेंशियल पार्ट, दैट की पैसे कहाँ से आएंगे, और वो फिर हमारा काम है। Perfect, sir. Right. I like to share, you know, at Malhar pe, Kunal Kapoor had come as one of the esteemed guest at the end. And मैंने उनसे एक ट्रिक क्वेश्चन पूछा था कि मैंने उनसे पूछा था कि कंटेंट तो बहुत है ना कुणाल, बहुत सारा भरा हुआ है कंटेंट, तो अभी तो बंद कर देना चाहिए नहीं लोगों को बनाने के लिए, कुछ टाइम के लिए फनल काफी भर चुका है, यू नो, सब जगह इतना सारा कंटेंट हो रहा है। एंड कुणाल्स वर्ड वाज किधर है कंटेंट, किधर कंटेंट है, किधर भाई मुझे दे दो कंटेंट, यू नो। सो एंड दैट इज एग्जैक्टली जो रितेश बोल रहे हैं, राइट, कि हम लोग जो कंटेंट बना रहे हैं, हम लोगों को लगता है सामने से कोई ले नहीं रहा है, इतना स्ट्रगल हो रहा है। जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूसिंग में बैठे वो कह रहे किधर अच्छा कंटेंट, किधर है भाई, सब कुछ रिपीटेड से आ रहा है, राइट। सो आई गेस आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि अपॉर्चुनिटी बहुत है, नीड बहुत है, और अभी की नहीं है, लॉन्ग टर्म की है। जरूरी नहीं कि आज ही बनाओ, कल बना लेना, परसों बना लेना, बट अच्छा बनाओ, you know, because that is the only thing which will go. Jaldi nahi hai, but your first film or your second film or whichever one that you go to will lead you to the next network, right? So make it well. But everybody wants great content, and then follow a channel, you know, like so like Matchma Talent में if you're a part of this community, आपको हर एक चीज पता चलती रहती है। अभी लाइक हमने बहुत सारे एफर्ट करे होंगे आप तक पहुंचने के लिए, राइट। देन नेक्स्ट टाइम इफ वी डोंट हैव टू मेक those efforts to reach you, you will get all the information very easily, ना। कोई भी ऑफर होगा, कोई भी नेटवर्क होगा, कोई भी सेशन होगा, any producer director looking for anything, you will get to know it first. That is the power of the community. So start thinking about communities right now instead of just thinking of one approach. That's my take, as well as what Ritesh was saying. So I think, Nitin, your question also gets answered in that. How do I get movie into Amazon, Apple TV, and similar platforms? Through a distribution network. Division of percentage was discussed. What is the distribution process and market situation of short-term content like mini series or short films? We discussed there is a market, absolutely. The main format, of course, remaining theatrical, which a distributor gets involved with. But all the distributors are also आपका कंटेंट देख के they will be able to place it with the right. Plenty of OTT platforms for that, for short films. Plenty. Right. I think every OTT platform is having there is section of short films. नहीं, but question ये है कि उन तक पहुंचे कैसे? बता distributors. Correct, right? So that is, they will also entertain through the distributors. लोग आप तक पहुंचे, आप उन्हें हम तक पहुंचे, हम उन्हें. Absolutely. That's एक चैनल होता है ना. Yeah, absolutely. So that follow the channel, follow the process. Okay, anybody else that has a new question? I'm anyways reading it down to look out for new question. Srinath's question was, what is the best place to release an independent film? Cinema halls. Everybody is an independent filmmaker on है ना. मुझे तो ये concept बड़ा अजीब लगता है थोड़ा. Every filmmaker is an independent filmmaker. मैंने सुना नहीं कि कोई filmmaker किसी के लिए job कर रहा है. Yeah. It is called independent filmmaker. Yeah. An independent filmmaker. Absolutely. You आप जो कर रहे हो वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, उसके बाद आप बाकी का नेटवर्क बनाते हो, बाकी की चीजें आती है, पर आप तो इंडिपेंडेंटली रहते हो. कोई करना पड़ता ना. इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो बोलते ना, है तो इंडिपेंडेंट ही सारे. Yeah. कॉर्पोरेट तो रिलीज करता हूँ, फिल्में थोड़ी बनाता है कॉर्पोरेट कभी. Yeah. So Vinayak, your question about what kind of contracts, royalties, or any other paperwork involved, has it been answered, or do you need more clarity on it? ऐसी होती है जो यहाँ आई डोंट थिंक कि फोरम में बैठ के बताया जाए, तो थोड़ा लेंदी चीजें हैं ये. या तो फिल्म के लिए बैठेंगे तो वहाँ पे बता देंगे. जब किसी ने फिल्म बनानी ही है सचमुच, if he is इंटरेस्टेड,
तो जब वो सामने बैठेंगे तो सारे एग्रीमेंट करने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं ना, कोई भी ऐसे तो पैसा लगाएगा नहीं। Absolutely. सारे एग्रीमेंट, सारे फॉर्मेलिटीज बता दी जाएंगी। And also, I think we had also मल्हार के टाइम पे हम फिल्म लॉयर्स को लेके आए थे जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किया था, and we will again do similar sessions with them also from आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से. Plus we will also at some other point we will also do probably a more detailed session with Ritesh and he can also share that. So, but not for right now. Yeah. Outright purchase has been discussed, guys. Doesn't really happen. Vinayak is asking how a fresh film director can approach a producer, and apart from synopsis, script and character sketch, is there anything we should be well prepared with before reaching you? Synopsis, script, character sketch, and your personal experience also, because depending on that also, आपने कुछ तो बनाया होगा, कुछ दिखाने के लिए आपके पास भी होना चाहिए. आपने ये चीजें तो अच्छे से कर दी जो पेपर पे उतार दिया, but I have also, I mean, I have to gain some trust on you that whether you can shoot a film properly or not. क्योंकि बहुत से लोग होते, they are very good narrators. या पेपर पे बहुत अच्छी फिल्म बनाते, बस सामने नहीं कर पाते. सामने प्रैक्टिकली करना आना बहुत जरूरी है. बट एनीवे, फिर भी अगर आपने इतना होमवर्क किया हुआ है तो भी सफिशिएंट है. फिर बाकी का हम भी संभाल लेते हैं, प्रोडक्शन बहुत सी चीजें हैंडल कर लेता है. बाकी फिर हम टीम भी उनको देते हैं. If you are not very much, I mean, you can say that if I am not very much convinced that he can, or very much confident, then I will definitely give him my team. Sure. Sumit, your question, how can I get my film straight to Netflix? You can't unless you really know somebody at Netflix. Otherwise, there is a distribution channel which you have to formulate. That's the only way. You have to go for Netflix, so don't go for that too big. I mean, आप खुद सोचो कि आप Netflix देखते हो, जितने भी लोग हैं, मैं आप सबसे पूछता हूँ, देखते हैं आप? आपका कंटेंट किस बजट का है, पहले मुझे ये बताइए. 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, राइट? और आप जो कंटेंट उसमें देखना पसंद करते हैं वो कितने का होता है? 50 मिलियन, 100 मिलियन डॉलर्स. जब आप, क्या आप खुद देखने वाले हो क्या 5-10 लाख वाली मूवी नेटफ्लिक्स में? तो वो क्यों एंटरटेन करेंगे आपको? आप जगह देख के भी, मैंने बोला हमको अपने बारे में पता होना चाहिए ना, कहाँ जाना है. Beautiful. Yeah. I may sound a little bit harsh, but ये रियलिटी है. मैं कभी भी सच्चाई बोलता हूँ लोगों को. आप पहले देखो ना, मैं क्यों जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स में? क्या मेरी फिल्में वहां देखने जाएंगी? क्या मेरी फिल्म का बजट 5-10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ है, मतलब जो भी वेब सीरीज का, कोई क्यों देखेगा? तो क्या वो जो नेटफ्लिक्स में बैठे हुए लोग हैं वो नहीं जानते हैं कि भाई कैसा कंटेंट उनके जो व्यूअर्स हैं देखते हैं? आप खुद अपने आप से पूछो ना, आप नेटफ्लिक्स जब कभी ऑन करते हो कैसा कंटेंट देखते हो आप? जब आप खुद नहीं देखोगे तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरा देखे? आप दूसरे चैनल पे जाओ, तीसरे चैनल पे जाओ. और जरूरी है मतलब नेटफ्लिक्स ही करेगा तो ही बात बनेगी? कितने लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं ये भी देख लीजिए आप. गांव गांव में नेटफ्लिक्स है क्या? गांव छोड़िए, शहर में आप अपने दोस्तों यारों से पूछ लीजिए कितनों के पास नेटफ्लिक्स है. तो क्या मतलब है नेटफ्लिक्स पे जाने का? उससे तो अच्छा और भी बहुत सारे ऑप्शंस है ना. अमेजन है, ZEE5 है, MX प्लेयर है, बहुत सारे और भी बहुत है जो उतने पॉपुलर नहीं. मतलब पब्लिक कहाँ देखेगी? आप पहले तो देखो. जरूरी है कि नेटफ्लिक्स में कितनी शॉर्ट फिल्में देख ली आपने? खुद बता दो मुझे. क्या आप देखते हो नेटफ्लिक्स में शॉर्ट फिल्म्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नेटफ्लिक्स वाला आपकी फिल्में खरीदे? आप खुद देखिएगा. मैंने खुद कई फिल्में उसमें देखी, कई उसके वेब सीरीज देखे हैं, और ज्यादातर आप देखिएगा फॉरेन कंटेंट आप देखते हैं. और जो इंडियन कंटेंट होते हैं आप देख लीजिए कितने एक्सपेंसिव बजट में बनते हैं. तो आप अफोर्ड कर रहे हो क्या? मुझे भी मालूम होना चाहिए ना कि मेरी जो पॉकेट अलाउ करती है, मुझे उसके हिसाब से चीजें लेनी चाहिए, उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए. हर जगह नहीं जाना चाहिए ना. अभी पठान ने यहाँ 5,500 स्क्रीन में फिल्म रिलीज की, बिकॉज दे कैन अफोर्ड दैट मच. अभी आप 1-2 करोड़ में बजट में मूवी बनाएंगे और बोलेंगे मुझे भी 5,500 स्क्रीन चाहिए, तो कैसे लोगे? वो तो इतना दम रखते हैं कि वो रेंट पे भी ले लेते हैं. क्या आप दम रखते हो? वो 5,500 छोड़ दो, 550 स्क्रीन में भी लगा पाओगे क्या? तो फिर आपको जाना पड़ेगा ना वही नेटवर्क से डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब कि जहाँ पे कमीशन बेसिस पे चलती है. हमको सबसे पहले खुद को भी देखना चाहिए कि आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं. बड़ा बनना हर किसी को अच्छा लगता है. हर किसी को अच्छा लगता है कि शाहरुख खान या अक्षय कुमार की तरह लोग उनको पसंद करें.
डायरेक्टर बनना चाहता है तो हर किसी को लगता है कि रोहित शेट्टी, करण जौहर जैसा वो बने, बट उसके लिए टाइम लगता है। वो भी एक दिन में नहीं बने हैं, उनको भी बहुत मेहनत लगी, कई साल लगे, उन्होंने उतना रिजल्ट दिया है, तब आज उनकी फिल्में लोग देखना पसंद करते हैं। आप पहले वो जो एक जर्नी है वो तो चलना तो शुरू करो, है ना, जर्नी के लिए चलना पड़ता है ना। तो वो स्टेप आगे बढ़ाओ, स्टेप वाइज आगे बढ़ो, एकदम से सीधा छलांग लगाने की बात कर रहे हो आप। Why would they entertain you? So I think अपने कंटेंट को असेस करना कि आपका कंटेंट कहाँ पे कहाँ उसका राइट ऑडियंस है, ये बहुत एक ऑनेस्ट एक्सरसाइज होनी चाहिए जो कि फीडबैक से आ सकती है, ठीक है, और आपके खुद के एक ऑनेस्टी से आ सकती है। और दूसरा, एज अ प्लेटफॉर्म हम लोग जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जब आप अपने ट्रेलर्स शेयर करते हो हमारे साथ में, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे नेटवर्क में हैं हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर वो बता सकते हैं कि इसको किस तरफ डायरेक्शन दो, किस तरफ जाना है, वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। वी अंडरस्टैंड कि एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज जो कि जैसे मिस्टर स्वामी की और रितेश की है वो वही कर सकते हैं, वो एक्चुअली आप एज अ फिल्म मेकर शायद उतना नहीं भी सोच सकते होगे। तो यस, दैट इज व्हाट द कम्युनिटी इज ऑल अबाउट, बट फर्स्ट गेस, डोंट एम फॉर just the biggest guys. There are a lot of other channels which is completely okay to go for. और उससे आपकी प्रोफाइल बनती है, यू कैन से यू नो यहाँ पे रिलीज हुआ था, इतनी चली फिल्म, इतने लोगों ने देखा, that is what the next producer director wants to know about your profile. इतने सारे लोग हैं ऐसे, इन्होंने मतलब शुरुआत जो की है, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, उन्होंने यूट्यूब को प्रेफर किया। पर यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, बोलना चाहिए ऐसा मीडियम है जहां आप खुद अपनी फिल्म रिलीज कर सकते हैं। भले ठीक है ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, वो देखने के लिए वो अगेन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर से आप संपर्क कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपके पास दिखाने के लिए होता है ना कि ये यूट्यूब में ये रहा, कुछ तो है। कई लोगों ने हमारे पास कई लोगों ने भेजा, जैसे नए नए जो डायरेक्टर्स आते थे, मैंने उनका कंटेंट देख लिया, मुझे समझ में आ गया ना कि इसकी डायरेक्शन वैल्यू कैसी है। उसके बाद मैंने उन लोगों को काम दिया है। So Ritesh, another question from Shantanu is, how can regional films reach national buyers? रीजनल फिल्म के लिए रीजनल बायर सफिशिएंट होते हैं। हाँ, नेशनल बायर ओटीटी में हो सकता है, वहाँ पे डब्ड होती है ना लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेज में डब्ड होती है फिल्में। रीजनल फिल्म लाइक कौन से लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं? जैसे वो बंगाल से हैं तो आई एम श्योर वो बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल की भी फिल्में डेफिनेटली हिंदी में रिलीज की, अगर वो कंटेंट पसंद आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को लग रहा है कि हाँ ये चल सकता है नेशनल मार्केट में, उसको डब किया जा सकता है, डबिंग राइट्स बेचे जा सकते हैं। वहां भी डिस्ट्रीब्यूटर मेहनत कर सकता है, अगर उसको लगा कि, या तो फिर ये भी हो सकता है कि चलो वो बजट नहीं लगा रहा है, पीएनए में पैसा नहीं लगा रहा है, बट ही कैन गाइड यू, पैसे आप लगाइए फिर, अगर इफ यू कैन अफोर्ड, तो वो भी किया जा सकता है। सबसे अच्छा तरीका है कि उसको हिंदी में या अदर जिन जिन स्टेट्स में लगाना वहाँ के लैंग्वेज में डब कर दीजिए। बेस्ट तो है कि हिंदी में डब कर दिए, बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं आता, वो नॉमिनल एक्सपेंडिचर होता है, वो करके फिर उसको रिलीज किया जा सकता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर को दिखा के, वो मैंने बोला ना कुछ चीजें होती है जो डिस्ट्रीब्यूटर के सामने बैठ के डिसाइड की जा सकती है। Perfect. So before we go to the last two questions and exchange the contact details of the relevant people, one trailer I like to bring in here, which has been shortlisted. Team, if you can give me the host access, I like to play that film. So that's a trailer. जैसे आप लोगों ने नागेश की ट्रेलर को support किया, support this one. And Ritesh, this one is for your eyes. Sure. যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন। আবার ফেলে দাও, মগজাস্তের একটু শান দিয়ে নিচ্ছিল আর কি। আদরের দিদি ভাই, তোমার জন্য ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ আমি রেখে যাচ্ছি, আর রিয়েল ট্রেজার। Here it is. Shayan is missing. What? Dr. Shayan Guho, একজন ফ্রিমেসন। গুপ্তধনটা কোথায় ডক্টর গুহ? I don't know. To each is given
a bag of tools. A shapeless mass and a book of rules. স্বামী বিবেকানন্দ একজন ফ্রিমেসন ছিলেন। ভদ্রকালী টেম্পল। এই ভদ্রকালী দেবীর 5 চোখে কিন্তু বসানো ছিল আজকের এই কোহিনূর হিরে। তার মানে তুমি বলতে চাইছো গুপ্তধনটা আসলে কোহিনূর? স্যার সেটা এখন কলকাতায়, আপনি ভাবতে পারছেন? কিন্তু কোথায়? ইতিহাসটা একটু খুঁজে দেখা দরকার। কোহিনূর যখন ভারত থেকে লন্ডনে গিয়ে পৌঁছলো তখন অনেক হইচই হয়েছিল জানিস। অনেকেই বলেছিল যে ওটা আসল কোহিনূর নয়। তাহলে ব্রিটিশরা যেটা পেয়েছিল সেটা কি? হয়তো সেটা অন্য কোনো হিরে, হয়তো ছোট্ট দিলীপ তাদের আসল কোহিনূরটা দেননি। মাই গড। রহস্য ভেদের নিশানায় হে কলকাতা। কলকাতায় কোহিনূর। What do you think, Ritesh? Trailer was nice. I think they have made it a good budget. Yeah. But- Shantanu is right here. Shantanu? बट बीच बीच में साउंड जा रहा था, या तो बैकग्राउंड इन लोगों ने बीच बीच में डाला, बीच बीच में काटा है, या नेटवर्क की वजह से मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि बीच बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक था ही नहीं। लोगों की आवाज तो आ रही थी बट बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था उसका। बीजीएम उस तरह का ही बनाया इन्होंने या कुछ नेटवर्क इशू था? शांतनु यहीं पे हैं, बताएंगे? अनम्यूट करिए शांतनु। सॉरी, ये प्योरली नेटवर्क इशू था, बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा भरा हुआ है। अच्छा, आई थिंक पर्सनली ऐसा लग रहा था कि बीच बीच में से कट तो नहीं हो सकता नॉर्मली। नहीं रितेश, मुझे तो पूरा सुन रहा था, तो ये नेटवर्क इशू है। मुझे बीच बीच में ना आवाज चली जा रही थी। एक्चुअली रितेश, ये फिल्म हमने 2019 पे रिलीज किए थे, तो अभी ये सिर्फ एक एमएक्स प्लेयर पे है, जहाँ पे ये कमीशन शेयरिंग मोड पे है। लेकिन ये मेरा ये जस्ट जानकारी के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिल्म फर्स्ट फिल्म फॉर माई सेल्फ एंड ऑल्सो फॉर माई प्रोड्यूसर। तो हमने जो दिक्कतें इधर फेस किए थे कि जब हम इस कंटेंट को बनाए थे, इट वाज वेरी रिसर्च प्रोडक्ट। इट्स जस्ट आई वांट टू शेयर द वेरी कैस्ट लाइन ऑफ द फिल्म, जहाँ पे हम ये प्रूव करना चाहते थे कि जो कोहिनूर डायमंड है उसका जो हिस्ट्री है, इट्स अ वेरी मिस्टीरियस हिस्ट्री। ओके, एंड अभी भी हमारे सामने आप गूगल करो तो ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आएंगे जो ये आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं कि आज जो हीरे को हम कोहिनूर के पहचान पे जानते हैं, जो ब्रिटिश म्यूजियम पे आपको लगता है कि है, क्या वो सच में कोहिनूर हीरे है? ये हो सकता है कि नहीं है। तो यहाँ से इस कहानी का शुरुआत था, और फाइनली हम एक प्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं कि जहाँ के लग सकता है कि ये शायद कलकत्ता में होगा। तो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द फिल्म इज कोलकाता कोहिनूर इज इन कोलकाता। तो माय प्रॉब्लम वाज दैट कि जब हम ये फिल्म बना चुके थे, वी हैव आवर ट्रेलर्स, तो हमको ये पता नहीं चला कि हम ओटीटी लेवल पे कैसे जाए, क्योंकि टिपिकल बंगालीज ओटीटीज सिर्फ 1 या 2 ही है। तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम नेशनल ओटीटीज पे कैसे इसको ले जाए, और हमको कोई ऐसा प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा था या प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स नहीं मिल रहा था कि कैसे हम इसको आगे ले जा सके। तो बहुत दिनों के बाद ये लास्ट आपके 2019 पे 3 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे भी सिलेक्ट हुए थे ये फिल्म, जहाँ पे 2 पे हमको अवार्ड भी मिले थे, और नेशनल लेवल पे 2 फिल्म फेस्टिवल पे ये स्क्रीनिंग हुए थे, एक दिल्ली में और एक बेंगलुरु में। बट एनीवे, तो वो एक प्रॉब्लम था फॉर ए रीजनल प्लेयर कि हम इसको कैसे एक लार्जर ऑडियंस के लिए ले जा सकते। तो अभी तो काफी टाइम हो गया है, आई डोंट नो इफ दिस फिल्म इज वैलिड फॉर फर्दर प्रीचिंग और फर्दर मूवमेंट, आई डोंट नो, बट फॉर द नेक्स्ट आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, और मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए ये जानना चाहूंगा कि ऐसे जब रीजनल फिल्म मेकर एक फिल्म बनाते हैं तो वो आप तक कैसे पहुंच सके, या रीजनल कहाँ पे जा सके जहाँ पे उसको एक फिल्म का प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि हाँ आप उसको हिंदी में डब करिए या ओडिया पे डब करिए, कि
आप मेरे पास आइए, आई कैन टेक द फिल्म फ्रॉम यू एंड आई कैन गाइड इट टू द इंटरनेशनल मार्केट और फिल्म फेस्टिवल मार्केट, या तो मैं ओटीटीज को डील कर सकता हूँ जहाँ पे आप लैंग्वेज डब कर, क्योंकि ये फिल्म बन गया था, डबिंग का कॉस्ट तो इतना कुछ आएगा नहीं, तो वो तो हम कर ही सकते थे। स्वामी जी का फोन उनको उठा। So that is what Shantanu, that is what we're talking about. कि we will be able to help you and everybody in that. कोई सीधा आंसर नहीं है. It is not something कि everybody knows everybody, right? But that is where we have to form a human chain, right? And that is where Match My Talent stands in, because Ritesh and Mr. Swami अपना काम कर रहे हैं. उनके पास बहुत जिम्मेदारी का उनका अपना काम है जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है. हमारे जो बाकी डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स हैं वो काम कर रहे हैं. आप लोग फिल्म मेकर्स हैं जो कि अपने क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं. आपका एक विजन है, आपका एक ड्रीम है, उसको एक आगे लेके जाने का. सो एवरीबडी इज डूइंग दैट, बट दैट इज वेयर आवर प्लेटफॉर्म. हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे आप छोड़ रहे हो उसके बाद जिसका काम है वो कैसे उससे कनेक्ट हो, you know. So like I said, like best we can share is that okay, be a part of the community. और जब भी जो भी कोई क्वेश्चन आए लास्ट मिनट से पहले, थोड़ा पहले reach out to us and we will connect you to whoever we can. Yeah, please Ritesh. I would like to ask Mr. Ghosh that does he want to release that movie in Hindi language or what? What is his I'm fine with releasing Hindi language, और या ये अगर कोई OTT प्लेटफॉर्म पे आता है हिंदी डब करके तो वो भी हम कर सकते हैं. ओके. आप सोनिया, आप मुझे इनके जो ट्रेलर will connect you. आप लोग को कनेक्ट करते हो. मैं एक बार पहले मैं चेक कर लूं आराम से, उसके बाद में फिर इनसे कनेक्ट करता हूं. Awesome. There you are. Thank you, sir. I would need to first watch the whole film before we. Sure. Absolutely. हम लैंग्वेज की फिल्म पहले देखते हैं पूरी हैं. हम अपने फिर उस लैंग्वेज के एक्सपोर्ट को ला कर रखते हैं जो हमें बताता है कि ओके ठीक है ये डायलॉग था. बट अच्छा, आपके इंग्लिश सबटाइटल्स हैं फिल्म में? या फुल्ली और बेटर हो जाएगा वो, तो मैं भी खुद ही समझ जाऊंगा. या लाइक द मूवी, आई विल डेफिनेटली गो फॉर द रिलीज हिंदी डब. मेरा ख्याल है बेटर होगा कि इसको हम हिंदी डब करके किसी भी OTT में सेल आउट करें. दैट वुड बी मच मोर बेटर फॉर बोथ ऑफ अस. Okay sir. Amazing. So thank you Ritesh for that offer. Very encouraging. So आप सब ने जिसने ट्रेलर्स शेयर करे हैं दैट इज ग्रेट, बट अभी हम आपको एक फॉर्म का लिंक यहाँ पे शेयर कर रहे हैं. अगर आपके पास कोई भी फिल्म है या आपकी नेक्स्ट कुछ महीनों में होने वाली है तो प्लीज शेयर इन योर डिटेल्स देयर, एंड देन व्हाट सपोर्ट यू नीड. इट्स अ पार्ट ऑफ सिंपल क्वेश्चंस हैं, जस्ट फिल दैट अप और वो हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगा. दैट्स डॉक्यूमेंट फॉर्म. I request all of you to fill in that, because यही एक तरीका है जिससे हमको पता चलेगा where you need help, right? And then wherever we will be able to connect you, we promise we will. अपने trailers के link जिनके आज trailers नहीं भी दिखाए जा सके, please drop it here. And इसके बाद भी, this is not only for your next film, but for every other film, please keep using this form. You know, और अगर आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट हैं, if you are taking in the membership, then anyways आपके पास सारे चैनल्स होंगे मुझसे डायरेक्टली बात करने के, हमारे पूरे नेटवर्क से बात करने के. So that's not going to be a problem at all. So start from here at the form. And thank you all the 7 people who have joined right now, taken on the 50% membership and joined. Awesome. Congratulations. Thank you for joining the community. Any last questions for Mr. Ritesh, apart from what's already been covered? Okay, one question for you, Shantanu. What was the budget of the film? Do you know? Trade secret पूछ रहे हैं कोई आपसे? नहीं, एक्चुअली ये पूरा हमारा जो मेकिंग एंड रिलीज बजट था, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 1.25 crore. 1.25 CR. Yeah. Okay, and this was made in 2019. 2009. So थोड़ा सा इन्फ्लेशन ऐड कर लो अगर आज के टाइम में बनाना है तो. Right. So Ritesh, last question for you. Sorry, you were saying something. Okay. Last question ले लेते, फिर I have to take the leave. Yeah. So last question from Sumit is that does the distributor look after the promotion and marketing of the film? Obviously, what are distributors for them? Because ये एक दोनों आज की डेट में एक ही चीजें हो गई है ना. जो प्रमोशन एंड रिलीज देखता है उसी को तो डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं. Yeah.
So yes, so the जो वो margin है जो कि distributor आपसे charge कर रहे हैं, वो आपका network बढ़ाने के लिए, फिल्म की positioning करने के लिए, और उसके लिए उनको खुद भी marketing and promotion करना पड़ेगा. कोई भी मूवी आप खुद रिलीज कर सकते थे, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके पास वो नेटवर्क नहीं होता, वो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर के पास होता है, उसने उसी में तो मेहनत की है, वो आपसे उसी का परसेंटेज मांगता है या पैसे मांगता है, सिंपल. और उसमें जो मिस्टर स्वामी ने बोला था कि stay involved, like just assuming that the distributor will do it, वो तो करेंगे, but आप, because it's your story, it's coming from your head, it's coming from your heart, you know, so stay involved in the publicity. It will definitely go to better places. Okay. Yeah. Ritesh, I know I said last, but I am going to request for one little that I read right now, last, pakka last. Sure. How is revenue earned through OTT platform? You just sell to them, one thing, and second thing, if they are taking your any content on the commission basis, then they have their own analytics. Depending on that, they share on the 50-50 basis, sometimes 60-40, sometimes 70-30 or 30-70. It all it all varies from person to person or from content to content. So there is an upfront money that they buy it out for, and then there is revenue sharing. Yeah, revenue sharing. That is called commission. And that from OTT to OTT and from content to content, it will vary that key at what basis they are going to take your content on commission basis. It can be 50-50, 60-40, or even 70-30 also. Or ये transparent होता है, trust करा जा सकता है? Yes, you have to. You don't have any other option other than trusting them. Choice नहीं है तो trust कर लेना, but that's what it is. So some of them will show you the screens and the revenue, some won't, but that's all that you can. I won't lie at all. It do happens. Yeah. You lie, you don't have any other option. So try as much as you can for the upfront cost. That is what जो हाथ में आ रहा है. उसके बाद whatever analytics they show you and whatever percentage is decided, that is what you get. All right. Thank you, Ritesh. Thank you, Mr. Swami. He's not here, but please thank us. Very, very informative, very insightful. Knowing from content is king. बहुत cliche है. सुन सुन के सब पागल हो चुके हैं. But the truth is still the same. Content is the king. It's your story. It is your heart in it, how involved you are. Then your actors and your entire performing arts ensemble. You know, the person that you have in mind, awesome if you can get him or her. If not, look for the next, don't stop the process. And then there is no other option to a distributor. There is just no other option. There is nothing happening directly. You know, so the producer and the distributor is needed. I acknowledge, we acknowledge, Ritesh acknowledges कि ये लोग बहुत खोपचे में रहते हैं, दिखते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं. So इनको निकालना पड़ता है, and we can do that together. So like today's session is one such proof. Malhar Film Festival is another such proof. So we have to keep doing that. I promise you to keep doing that. And whoever you guys know, आप लोग को सबको कोई ना कोई distributor producer होगा जिसके साथ आपके relationship अच्छे हैं, keep sharing it with the community. You know, it is, everybody's not going to work with the same person all the time. So just keep sharing that and make it a thick community. Awesome. So with that, the next Foreground Forum is going to be on 8th March at 8 p.m. And it is going to be on script writing. We will get some of the most fascinating script writers to talk about their process and their thing. And with Ritesh, we are going to share with whatever you share us your trailers and your information. और ये option कोई आज के लिए valid नहीं है. Take your time. Ritesh is not going anywhere. Mr. Swami is not going anywhere. Filmmaking is not going anywhere. Whenever you're ready, share the best thing that you want us to take it to them. Definitely. All right. Thank you, everybody, for being so attentive and participatory. Very informative platform, I would say. Thank you. Thank you, everybody, for watching me. Thank you. Thank you, everybody. Good night. Stay in touch. Take care. Bye-bye.